हाँ जी सर, ओके, वी आर लाइव नाउ. Started recording of YouTube. Since 177 member has joined and other may be in the line to join and will join in 5-10 minutes. So first of all, sir, I welcome you all on behalf of Chartered Accountant Association and Voice of CA. आज हमारे फाउंडर वॉइस ऑफ सीए संजय अग्रवाल जी, उन्होंने पहले लीव ऑफ एब्सेंस ले ली है, तो मेहता जी से बस गारंटी करवानी है, बिकॉज टुडे इज द सेंट्रल काउंसिल मीटिंग एंड ही इज इन श्रीनगर पहलगाम. दैट्स व्हाई ही कुड नॉट हैव ज्वाइन आवर टुडेज प्रोग्राम. तो मैं जितने भी हमारे पैनलिस्ट में हैं, मेहता जी सबसे पहले जो हमारे आज के फैकल्टी हैं, स्पेशली इंदौर से टाइम निकाला उन्होंने आज के वेबिनार के लिए. देन अमरजीत कंबोज जी, सुभाष जैन जी, एंड देन रोहित कपूर जी एंड शशि भूषण जी. रोहित जी, यू मे आल्सो स्टार्ट योर वीडियो, क्योंकि आप स्टेज में बैठे हैं. तो हमारे पार्टिसिपेंट 184 हैव ज्वाइंट. तो आप सबका मैं वंस अगेन चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं कि आज का जो टॉपिक हमने चूज किया है स्पेशली मच नीडेड है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 30 सितंबर तक तो हमने अप्लाई करना ही है रिन्यूअल फॉर रजिस्ट्रेशन. लेकिन मैं वो बात कर रहा था परीक्षित जी से, जो अभी हमारे फैकल्टी आए थे कुछ दिन पहले 140 असेसमेंट के ऊपर. तो वो कह रहे थे कि विदाउट वेटिंग फॉर द 2025 बैलेंस शीट यू शुड बी इन द लाइन. आप अप्लाई करो ज्वाइन कर रही हो रिन्यूअल, ताकि आप लाइन में लग सको, रजिस्ट्रेशन. क्योंकि वो थोड़ा टाइम भी लेते हैं कई बार. उनका एक माइंडसेट होता है कि जो एप्लीकेशनें इस महीने में आएंगे तो हम उसको पहले देखेंगे, इस डेट को देखेंगे आफ्टर द लैप्स ऑफ 1 मंथ. तो दैट्स वाई आज मेहता जी हमें गाइड करेंगे तो कि कैसे जो 1023C है वो अब खत्म हो गया, जो हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाला था, तो वो भी मर्ज हो गया 12A में. तो उसमें जो पहले 1023C में है, 12A में उन्होंने कौन सी क्लोज में कैसे फॉर्म भरना है, और 5 साल से 10 साल वाली जो क्लोज है उसका क्या करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, वेयर इट इज रिक्वायर्ड. और 5 लाख से कम वाले एजुकेशनल और जो हेल्थ इशू हेल्थ वाले चैरिटेबल हैं, उनको स्टिल द एग्जम्पशन इज देयर और नॉट. जो 1023C क्लोज 3AD आई थिंक जो थी वो 5 करोड़ वाली, वो है या नहीं है. तो इन सभी चीजों के ऊपर और क्वेरीज के लिए जो ग्रुप बनाया था, वहां पे भी हमें काफी क्वेरीज आई हैं. मेहता जी ऑल्दो हैज गॉन थ्रू ऑल द क्वेरीज, बट फिर भी एट द एंड ऑफ द डेलिब्रेशन हम जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो इन्होंने नहीं इंक्लूड की होगी मेहता जी ने उस ग्रुप में से भी, तो वो हम आपको स्पेसिफिकली डेलिब्रेट करेंगे एट द एंड. और एट द एंड एक हमने, नॉट एट द एंड, बिफोर द एंड, तो हमने एक प्रोग्राम और ऐड किया है. हमारे फोरटेलर एस्ट्रोलॉजर पंजाब केसरी में, वो शेयर मार्केट के ऊपर उनके वीडियोस आते रहते हैं, नरेश अरोड़ा जी. मैंने उनको भी रिक्वेस्ट किया है, ही विल आल्सो ज्वाइन अस एट 5:45 एंड 6 o'clock वी विल हैव अ सेशन ऑफ 15-20 minutes ओनली, कि जो टैरिफ है, what will be the impact of the tariffs astrologically, economically, on the share market, financial market, as well as on India, as well as on the whole world. जो अभी ट्रम्प साहब ने लगाई हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लास्ट में वो हम 15 मिनट का सेशन रखेंगे. बीइंग ए प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेशली डीलिंग इन फाइनेंस, हमारे क्लाइंट भी पूछते हैं कि जी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, तो उसके लिए भी हमने लास्ट में जोड़ा है. तो मैं सोनी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शशि पाल जी भी जुड़ चुके हैं, और जोगेश बांका जी भी उड़ीसा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं. और संख्या भी हमारी 2013 हो गई है, 213 हो गई है. तो वेरी सुन वी विल सी दैट इट विल बी 300 और 400 वेरी सुन. तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आई विल डायरेक्टली इंट्रोड्यूस आज की जो हमारी फैकल्टी हैं. सबसे पहले मैं इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द ब्रीफ प्रोफाइल, मैं ये बता दूं कि मेहता जी इज वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, सोट आफ्टर फैकल्टी ऑन दिस टॉपिक. आप सबको अगर याद होगा कि जब 10B और 10BB फॉर्म्स हमारे रिवाइज्ड हुए थे एक्सटेंसिवली, उसमें सारा ही चेंज कर दिया था लास्ट टू लास्ट ईयर, तब मैंने वॉइस ऑफ सीए पे हमने, और इंस्टीट्यूट में संजय अग्रवाल जी डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे,
तो इंस्टीट्यूट में भी हमने 3 प्रोग्राम्स, अबाउट 10,000 मेंबर्स वर अटेंडिंग इन ईच प्रोग्राम एटलीस्ट, तो वो भी हमने कराए थे इनके 10B और 10BB पे, along with 2 more faculties from Mumbai. तो that was the detailed program. तो मेहता जी has also been associated with the institute regarding the drafting of जो 10B और BB चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का जो गाइडेंस नोट आया है कि आपने फॉर्म्स में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, देन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है उसके ऊपर भी ही इज आल्सो associated with the ICI committees regarding the updation of these guidance notes. So in brief, I will introduce him. He is a chartered accountant, obviously, from Indore, and having the experience of more than 30 years. He was National Secretary General of the All India Federation of Tax Practitioners, AIFTPA, for the year 2023. तो मेहता जी का तो आधा प्रोफाइल मेरे मुझ में नहीं याद है, तो he has been awarded many times by the government of the then I think governor, वो इनमें लिखा भी होगा इन्होंने, by the Rajasthan for his contribution at various level, and he has also been the national vice president of AIFTP for the year 2021 and 24. He has been executive committee member of TPA Indore from 13 to 17. He is a renowned direct tax speaker across India on issues of TDS, TCS, capital gain, especially religious and charitable trust, search and seizure, penalty, prosecution, every topic. He played a key role in ICA technical guide. I already have informed you publication, religious and charitable trust, trust audits under Income Tax Act. His contribution in ICA publication on guidance note on tax audit under section 44AB of the Income Tax Act, also recognized by ICA in its publication. He completed his higher secondary and education from Bhilwara, Rajasthan, then moved to Indore for pursuing chartered accountancy, awarded by the then CM Rajasthan, Shri Haridev Joshi ji, and Governor of Rajasthan, Shri O.P. Mehra ji, on achieving rank in merit list of Rajasthan Higher Secondary Board of Examination. Received award at allocation and debate competition and awarded by the then CM Rajasthan, Shri Shiv Charan Mathur ji. He has been at various associations. I have already told, National Secretary, AIFTA, convener of Direct Tax Representation Committee, National Vice President, Chairman, AIFTA, Secretary, Joint Secretary. Over to Mehta ji on this most important topic of 12A renewal registration, 1023C, and other topics related to this. Over to Mehta sir. Thank you, Ashwini ji. I am thankful to Chartered Accountant Association and Voice of CA and our respected Central Council member Sanjay Agarwal ji for giving me opportunity to discuss some important issues of the 12A ATG renewal. All the professional friends and participants, सर शेयरिंग मुझे अलाउ कर दीजिएगा अश्विनी जी, स्क्रीन। सॉरी सर, सॉरी, इन हरी आई हैव फॉरगॉट, जस्ट अ मिनट सर। अब आप कर सकते हैं सर, नाउ योर पोस्ट। यस, yes. So my screen is visible? Yes sir, yes. Okay. So dear friends, first of all, what is the requirement of registration of a trust or institution under section 12AB and why it is required? If any of the trust or institution which is registered under section 12A or 12AA earlier to 1st April 2021, it was required to get it registered under section 12AB. However, the due dates for the registration under section 12A1AC clause 1 was earlier 3 months from 1st April 2021. Later on, this date was extended to 31st March 2022, 30th June 22, then
30th September 2023. Again, this date was extended up to 30th June 2024. So, any of the trust which was registered earlier to 1st April 2021 was required to get it registered up to 30th June extended period. Or if any of the trust or institution is registered under Section 12AB or approved under Section 1023C, Clause 4, 5, 6, and 6A. So, as Ashwini ji has also told that earlier to 1st October 2024, 1023C was required to be registered separately. But now the provisions were separate under 1023C, but registration provision for 1023C institutions have also been incorporated under Section 12A1AC with effect from 1st October 2024. Because any of the charitable institution or religious institution can obtain only one registration either under 12AB or under 1023C. So they have merged both so that there will not be any confusion. And the period of the said registration or approval is due to expire at least 6 months prior to expiry of the said period. So most of the charitable and religious institutions which were registered earlier to 1st April 2021 or have got registered themselves during earlier year for a period of 5 years, and if their last assessment year of the registration is assessment year 2026-27, then all the such charitable and religious trust and institution are required to get themselves registered on or before 30th September 2025. Say, for example, any of the trust was granted registration or approval in the month of June 2022 from assessment year 2022-23 to assessment year 2026-27 for a period of 5 years. Then it will have to apply registration on or before 30th September 2025. So most of our clients will get covered into this clause. Then if any of the trust or institution has been provisionally registered under Section 12AB or provisionally approved under 1023C, then at least 6 months prior to expiry of the period of provisional registration or provisional approval, or within 6 months of commencement of its activities, whichever is earlier. So if any of the trust or institution which has not commenced its activities, then they will apply for they should have or they would have applied for provisional registration under Section 12AB or 1023C. Then in such a case, if their activities have started, then they are required to apply within 6 months of commencement of its activities, or at least 6 months prior to expiry of the period of provisional registration. For example, if the trust was registered from assessment year 2024-25 to assessment year 2026-27 for a period of 3 years, then it will have to apply for renewal on or before 30th September 2025. Or if its activities of the trust have been started in the month of February 2025, then it will have to apply up to 31st August 2025 within 6 months of commencement of the activities. Then 12A1AC clause 4. If the registration of the trust or institution has become inoperative due to first proviso of Section 11 subsection 7, then at least 6 months prior to commencement of the assessment year from which the said registration is sought to be made operative. And 12A1AC clause 5. If the trust or institution has adopted or undertaken modification of the objects which do not conform to the conditions of registration, then within a period of 30 days
from the date of said adoption or modification. So if any of the trust or institution has changed or adopted new objects which are out of the condition of registration granted under earlier 12AB registration, then it will be deemed that this has violated the conditions of registration. So they will have to get registered within 30 days from the date of said adoption. So this is very important condition. Otherwise, the such trust may attract section 115 TD. Then section 12A 1AC clause 6. If any of the trust or institution which has not commenced its activities, then such trust has to apply for registration at least 1 month prior to commencement of the previous year, relevant to the assessment year from which the said registration is sought. For example, if the activities have not commenced and applied for registration during previous year 24-25, then provisional registration shall be granted effective from assessment year 25-26 to 27-28. So if activities have not commenced, then provisional registration will be granted, and such registration are granted by the CPC itself. So our jurisdictional commissioner CIT exemption does not have authority for this provisional registration. This has to be granted by the CPC, because it is only the provisional registration where the activities have not been commenced. If the activities have commenced and no income or part thereof of the said trust or institution has been excluded from total income on account of applicability of section 1023C or section 11 and 12, then for any previous year ending on or before the date of such application at any time after the commencement of such activities. So if say for example any of the trust has been established before 10 years or before 4 year, 5 year, but it never got registered under section 12AA or 12AB, and it has never claimed any exemption under section 1023C 4, 5, 6 and 6A or section 11 and 12 because it was not registered, then such trust will have to apply under 12A 1AC clause 6B. So such trust can also file an application with condonation of delay. If any of the application is filed beyond time allowed for registration under section 12A 1AC, so if any of the trust or institution has failed to apply within the specified time, then commissioner can condone such delay. If any of application is covered under 12A 1AC from clause 1 to clause 6, then such application shall be deemed to have been filed within the time. For example, if the activities have been commenced in June 2023, but first time applied for registration in the month of June 2025 under section 12A 1AC clause 6B, if delay is condoned, then registration shall be effective from the assessment year 2024-25 to 28-29 for a period of 5 years, but not for 10 years. So since first of all the activities have been commenced, so provisional registration will not be granted. It will be granted permanent registration, but permanent registration will be granted for a period of 5 years only, not for a period of 10 years under this clause capital B. Registration application in which form? Either in the form number 10A or 10AB. So first of all, we have to check that under which form number we have to apply for the renewal or for the fresh registration. And here checklist is also provided for the application. Before filing the application, we should keep ready the certain documents so that it will save our time in filing the online application. So as per Rule 17A, application as per Section 12A 1AC Clause 1 to 6 for registration of a charitable or religious trust or institution shall be made in the following form number 10A or 10B, 10AB. So in form number 10A, in case of clause 1 or 6A. So only there are two situations when form number 10A is required to be used.
12A 1AC1. 1AC1 is applicable if the trust was registered under section 12AA or 12A earlier to 1st April 2021. And section 12A 1AC clause 6A is applicable only when activities have not been commenced. So form number 10A has limited applicability, and in all other cases under section 12A 1AC clause 2, clause 3, clause 4, clause 5 or clause 6 capital B, form number 10AB is required to be filled up. What are the documents required for furnishing the application in 10A or 10AB? So these are the list given as per Rule 17A. This is the self-certified copy of the instrument creating or establishing the trust or institution. So, dear friends, you will find here that as per Rule 17A subsection 2, at most of the places the word used is self-certified copy. So, in my opinion, self-certified copy word was earlier used when physical applications were filed or physical hearings were there before CIT exemption, jurisdictional CIT exemption. Then they used to issue a notice that kindly produce the self-certified copy of certain documents. So the same notices have been copied under Rule 17A still till now. But in my opinion, in case of online filing of applications, self-certified copy word may be removed because the application itself is being filed either through the DSC or through the EVC code or OTP of the assessee himself. So everything is undertaking or the responsibility of the assessee himself. However, the word self-certified is everywhere mentioned. So we should insist our client that they should provide us self-certified copy of the instrument creating or establishing the trust or institution. It may be either the trust deed or the bylaws of the society or institution or memorandum and article of association in case of the section 8 company, self-certified copy of the document evidencing or the creation or establishment of the trust or institution if not established under an instrument. May be possible that any of the trust has been created through a will of any individual person or any person. So then this clause may be applicable. Self-certified copy of the registration with the ROC or registrar of firm and registrar of societies or registrar of public trust. So any of the charitable or religious trust institution might have been registered with ROC, registrar of firm and society or registrar of public trust. So their registration certificate copy should be self-certified and should have to be attached with the application. Self-certified copy of the registration under FCRA if registered under such act. Self-certified copy of the existing order granting registration under section 12A, 12AA or 12AB as the case may be. So 12A and 12AA is, I think, will not be of much use because most of the trust have already been registered under section 12AB during earlier years. So registration certificate under section 12AB is required to be furnished. Self-certified copy of the order of rejection of application for grant of registration under section 12A, 12AA or 12AB as the case may be. If any of the trust or institution had applied earlier and its application was rejected, then such rejection copy will also be required to be furnished. If thereafter no such registration was applied, then it has to be furnished here. Then where the applicant has been in existence during any earlier year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of the applicant relating to such prior year or years, not being more than 3 years, immediately preceding the year in which the said application is made, for which such accounts have been made. It means if the application is being made during financial year 2025-26, then immediately preceding 3 years financial accounts, annual accounts are required to be furnished here. So 24-25, 23-24 and 22-23 financial year annual accounts are required to be furnished here. In case of business undertaking, its audit report is to be furnished. In case of the any
profit and gains of business and profession. Then self-certified copies of annual accounts of such business and audit report, if there is any under 44 AB, is also required to be furnished, not being more than 3 years immediately preceding the year in which the said application is made. Self-certified copy of the documents evidencing adoption or modification of the objects. So if the registration is being applied under this condition, then self-certified copy of the documents evidencing adoption or modification. So if there is any amendment in the trust deed or amendment in the bylaws or the resolution is there, then copy of such document in case of change of object is required to be furnished also. And notes on activities of the applicant. So this also is required to be attached along with the application in 10A or 10AB. So what are the activities of the institution, whether it is carrying out charitable activities or religious activities. So all these things are required to be furnished, given information in the notes on activities of the applicant. So what are the details required to be furnished in the form number 10A? In row number 10 of the form number 10A, has the return of income been filed for the last assessment year for which the due date has expired? If yes or no. So for the assessment year 2025-26, the due date has not expired. So we are not required to give information relating to assessment year 2025-26. If we have furnished the return for assessment year 2024-25, then we are required to give tick here as yes. Then details in the row number 11 to 19 are required to be furnished here for the as on date of the application. So say for example, the application in form number 10A is being furnished as on today 30th August 2025. So all the details of corpus, long-term liabilities, land and building, funds, other liabilities, other fixed assets, investments, other assets, all these details from row number 11 to 19 are required to be furnished as on date of the application. So this for this purpose, we will have to ask our client, our assessee, to prepare his income and expenditure and balance sheet as on today also to fill up this information. Because while we will furnish the form in the utility, we will not find that details in row 11 to 19 are to be provided as on date of application. But in the notified form number 10A and 10AB, these words are mentioned that details in row 11 and 19 are to be provided as on date of application. Then income details. Income received in the 3 previous years, immediately preceding the previous year in which application is made. So if we are furnishing the application in the financial year 2025-26, then our immediately preceding 3 years income is required to be furnished here, year and grant received from central or state government. So if the assessee has received any grant from the central or state government, then it has to be mentioned here. Grant received from companies under CSR. So if any of the trust institution has received CSR fund, then it has to be mentioned here. Any other specific grant, that has to be mentioned here. Any other income is required to be mentioned here, and then total. Whether the fund or institution has incurred any expenditure of religious nature. If yes, then please provide the following details for 3 previous years, immediately preceding the previous year in which the application is made. Previous year, total income, expenditure of religious nature, and percentage to total income. So this clause, row number 21A, 21B, is applicable when any of the trust or institution is a charitable institution. So under section 80G, there is a restriction that
if any of the trust or institution is carrying out charitable activities and also carrying out religious activities, then it cannot spend more than 5% of the gross receipt towards religious purposes. So to find out any of the violation for this purpose, they have mentioned this clause, row number 21A and 21B. If any of the trust or institution is of a religious nature and they have not claimed, they are not going to claim under 80G and they are of religious nature, then this clause will not be required. Then in the form number 10AB, details of all the authors, founder, settler, trustee, members of the society, members of the governing council, director or shareholder, etc. is required to be given here. Their name, relation, percentage shareholding, unique ID number, ID code, address, mobile number and email address. So mobile number and email address also of all the office bearers and the settler or trustee or member of the society, etc. are required to be given in the form. Details in form number 10EB, details of school, college, temple, places, land, building, bank account, etc. are also required to be given in form number 10AB. So this detail is not required to be given in form number 10A. So details of row number 10, 11, 12. These are to be furnished in the form number 10AB. So details of school, college, university, hospital, yoga institute, religious places, any other institution being managed, controlled, administered, or owned by the applicant. So even if any of the trust or institution is managing or controlling any other institution, details of those is also required to be given. If any of the religious institution, religious trust has temples at various places, various cities, then details of all such religious places is required to be given. So name of the school, college, university, hospital, etc. is required to be given. Nature of activity, address, whether owned by the applicant or not. So if any of the temple, whether that temple is owned by it, if any of the educational institution is managed by the trust or institution, whether it is owned by the trust or institution or not, who is the person in charge of that place? So name of that person is required to be given, his contact number and his email ID is also required to be given here. So if any of the trust has running 5 different educational institutions and situated at various or different locations, then person in charge of each separate institution will have to be given here. Name will be given, his contact number and his email ID is also required to be given. If applicant has any business undertaking as property held under trust within the meaning of section 11(4), then such detail is required to be given here. If there is any income in the nature of profit and gains of business, then details of such profit and gain of business is required to be given here. Details of all accounts held by the trust or institution at the time of application in financial institution being a banking company or a cooperative bank to which Banking Regulation Act applies, including any bank or banking institution referred to in section 11 of 51 of that act. So as on date of application, if any of the trust or institution has opened a bank account, even if that bank account has been opened on or after 1st April 2025, but on or before date of application, then such bank account are also required to be furnished here. So IFSC code of that institution is required to be furnished. The name of financial institution we are not required to fill up. The utility will automatically fill up. When you will enter the IFSC code of the institution, the utility will automatically pop up here. Fill in the blanks being the name of the bank or cooperative bank. Then account number has to be furnished by us. Details of all land or building or both held by the applicant. So in case of form number 10AB,
this is also required to be filled up. In case of form number 10A, this information is not required, but in form 10AB, this information is required, details of all the land or building or both held by the applicant. So address of the land or building. If any of the trust has various agricultural land also, various temples, various dharmashala or other places, then details of all such land or building is required to be furnished here. Size of the land or building in square meter. So we will have to ask our client that he should keep ready all the immobile properties, land or building, and convert, if the agricultural land is in acre or bigha or in hectare, then this will have to be converted into square meter. Even if it is in gaj or square feet, then it will have to be converted into square meter, and the size of such land building will have to be furnished here. Then what is the purchase consideration paid or payable for such land or building? Stamp duty value at the time of acquisition, even if that property has been acquired 10 or 15 years ago, what was the stamp duty at the time of acquisition, that has to be furnished here. Mode of acquisition, what was the mode of acquisition of such land or building, whether it was acquired or whether it was gifted. So this has to be mentioned here. Date of acquisition, what is the date of acquisition of such land or building. Then in case of form number 10AB, various codes will appear. So we will have to be very much cautious, very much careful while selecting the code. At the serial number 1, there is a code 12A1AC clause 2. So clause 2 will be applicable when any of the trust or institution which was already registered on or before 1st April 2021 under section 12AA or 12A earlier to 1st April 21. Then they will have to apply for renewal. Then in such a case, we will have to select the code number 1. If any of the trust or institution which was provisionally approved, then such trust will have to apply at least 6 months before the expiry of period of 3 years. Then code number 2 will have to be selected, or if activities have commenced in case of the provisional registration within 6 months from the date of commencement of the activities, then code number 02 will have to be selected. If any of the trust or institution is going to apply because of application of proviso to section 11 subsection 7, then code number 03 is required to be selected. If any of the trust or institution has adopted any more, or there is any modification in the objects of the institution, then they will have to apply within 30 days from the date of adoption or modification of such objects. Then code number 04 will have to be selected. And if any of the trust or institution has never got registered earlier under section 12AA or 12AB, and now it wants to apply for 12AB registration as per section 12A 1AC clause 6 capital B, then code number 04 capital A will have to be selected. So under this clause, even if there is a condition that such trust has not claimed any exemption under section 1023C or 11 and 12 in any earlier year because it was not registered, so it can apply with condonation of delay also. So if its earlier year's income was taxable, they may claim its condonation of delay also. Then in case of ATG approval, if any of the trust was registered or approved under section 80G earlier to 1st April 2021, then it will have to enter the code number 13. Code number 13 will have to be mentioned here. If the trust or institution was provisionally approved and 3 years period is going to expire, or
it has commenced its activities, then within 6 months from the date of commencement of the activities, then clause number 14, code number 1414 will have to be selected here. If any of the trust has commenced its activities, say for example, the trust is 10-year-old or 4-year-old or 5-year-old, whatsoever, it has commenced its activities long back, but it could not apply registration at any time, or it was required to apply, but it could not apply, then such trust will have to at G capital B, then they will have to select the code number 14 capital A. Then if any of the trust or institution is applying for registration in the form number 10A, then these 4 code will appear in the utility. So first code will be 12A 1AC clause 1. So now this clause 1 will not be applicable because most of the trusts which were earlier registered earlier to 1st April 2021 are covered under this clause. So they have already got themselves registered for a period of 5 years. So code number 2. Under code number 2, if any of the trust or institution has not commenced its activities but wants to get itself registered under section 12AB, then it will have to apply under 12AC 6 capital A and selecting the code number 02. If any of the trust or institution which was approved under section 80G earlier to 1st April 2021, then it was required to opt for select the code number 11. So this will not be useful for us because these trusts have already got registered in the assessment year 2022-23 itself. If any of the trust or institution wants to get registered under 80G, but activities have not commenced, then in the form number 10A, they have to select the code number 12. Then registration details of FCRA and Darpan etc. are required to be furnished in row number 7 of the form number 10A and 10AB. So this row number 7 is in both of the form number 10A as well as form number 10AB. If the applicant is registered under Income Tax Act or Darpan portal or FCRA, then this information is required to be furnished here. Incorporation, creation, registration details provided in row number 4, B, C, and D should not be provided here because that information has already been furnished in row number 4. That is not required to be repeated here. Only Income Tax Act, Darpan and FCRA information is required to be furnished here. If any of the applicant receives or intends to receive any grant from the central or state government, then registration number with Darpan portal of the Niti Aayog should be mandatorily provided by the applicant. So we must take care that if any of our client wants to get grant from the central or state government, then they must get themselves registered under Darpan portal of the Niti Aayog, and such registration number should compulsorily be mentioned here. Registration details are required to be furnished with respect to all the registration under Income Tax Act and registration number with Darpan portal and FCRA. Under the form number 10AB, as I have already discussed that we will when in the utility you will find these options. So if तो सर पहले 1023C में थे तो वो फिर किस में करेंगे? 1023C वाले भी अब 12A 1AC क्लॉज 2 में जाएंगे। जो पहले 1023C 3A में थे वो ये जो ऊपर कोड नंबर 01 इसमें दिख रहा है ना, इस स्क्रीन पर ये 01 नंबर का जो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, हाँ, सब क्लोज 2 ऑफ क्लोज AC ऑफ 12A1, इस क्लोज के अंदर वो लोग जाएंगे बिकॉज दे वर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर 1023C 4, 5, 6 एंड 6A एंड 12A 1AC क्लोज 1। उसमें जो लोग रजिस्टर्ड थे ऑल दे विल हैव टू सिलेक्ट द 01 कोड। सो मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट विल कवर्ड अंडर 01 कोड। Then when you are doing work in the utility while filing the form,
you will find this My Profile. So to update contact details, visit My Profile. So in many of the cases, our contact details are not updated. So before proceeding, we should go to My Profile at this stage, or before furnishing, we should go to My Profile and then update the contact details of the trust or institution or the office bearer or the person in charge. Then we should proceed here. Otherwise, there may be some problem while validating the form also, and the information will go to the wrong email ID or wrong mobile number. So after updating this contact detail, then we will have to go file the form. So if we are furnishing the form in form number 10A, then we will find only these two clauses, 12A, 1AC, 6A. So activities have not commenced. If activities have not commenced, then we are required to furnish form number 10A and we'll have to select the 02 code. And in case of G, if activities have not commenced, then 12 number code will have to be selected. So application for registration in 10AB. So in 10AB, if you are filing the renewal for the next 5 year, next 10 years, then you will have to select the assessment year 2027-28. Because if any of your client was granted registration from assessment year 2022-23 up to 26-27, so here you will have to select the assessment year 2027-28. And here you will have to select the original, because condonation is not required to be here, because you are already applying on or before 30th September 2025. So here you will have to select the original and assessment year 27-28. And please select the condonation option on initial screen when filing form number 10A for previous assessment years. So if you want to get exemption, if you are not registered earlier, then you will have to select the condonation option. So in case of the Darpan portal details or FCRA details, we have to furnish this relevant law portal, registration number, date of registration, authority granting the registration, date from which registration is effective, whether any application for registration made by the applicant in the past has been rejected, then you will have to furnish that information. Then what are the objects of the applicant? So we will have to be very much careful while selecting the objects. If we are applying for a TG and our trust is only engaged in the charitable activities, relief to poor education, then we should be careful that we should not have wrongly selected the religious code here. Otherwise, this may face the situation of scrutiny notice at the time of assessment, because they cannot spend more than 5%. So AO will have to verify at the time of assessment this thing. Then this row number 6, whether the trust deed contains clause that the trust is irrevocable. If our assessee is any of the society, then this tab will not be activated while in the utility. It will be inactive in the utility if it is a society. If our assessee is the trust, then only this tab will be active. So these are the detail of earlier registration under various section 12A, 1023C, 80G, etc. FCRA. Yes. So date from which registration is effective. So if we are applying for the renewal of the trust under section 12AB, which was earlier registered for a period of 5 years,
So under this row number 7E, we will have to mention 1st April 2021 because most of the trusts which were registered earlier to 1st April 2021, they were granted the registration form from assessment year 22-23 with effect from 1st April 2021. If any of the application for registration has been rejected earlier, yes or no will have to be mentioned here. Details of author, trustee, etc. will have to be mentioned here. So all the code will have to be selected: trustee, author, settler, founder, member of society, or the office bearer. So that PAN number or Aadhaar number of the office bearer will have to be required to be mentioned here. If any of the office bearer or the member of the society or trustee does not have PAN number, then there any other tax identification number, passport number, elector's photo ID card, driving license number, or ration card number may also be mentioned here. Then details of school, college, as I have already mentioned earlier, this is to be mentioned here. So nature of activity: school, college, university, hospital, yoga institute, religious places, this has to be mentioned here. In case of the land or building, these tabs will appear in the utility. So whether address of the land or building, India, flat, pin code number, post office, these all tabs are compulsory also. Size of the land or building in square meter, this is compulsory tab. Purchase consideration, this is also compulsory. To be acquired or gifted has to be mentioned date of acquisition. In case of advancement of any other object of general public utility, if the trust or institution is also carrying out trade, commerce, or business, then their gross receipt from such activities also to be mentioned here, because if it is exceeding 20%, then its income will become taxable. So this has to be mentioned here. Then details of asset liabilities has to be mentioned here. Then all such, when your form is complete, then you will have to proceed and these things will appear. Whatever we have attached here, this is appearing here. If we have not attached anything, this is blank here. So everything is complete. Now we will have to preview our form number 10AB or 10A, whichever is here. So then if we has previewed it, everything is okay, then we can furnish the form. And after furnishing the form, you will find in the tab that you have applied for the assessment year 2027-28, form number 10AB, and the form has been submitted on 11 August 2025. The original form, form is verified also. This acknowledgement is here. If you find that you have furnished anything wrong or any information was left to be furnished, then either at the time of hearing, the commissioner will call for the details from you, or if you want to revise the form, then you can do one thing, that you may withdraw the form here and you can furnish the form again if due date is not expired, because due date is 30th September 25. Whatever form you have furnished, you will download from here. Download the receipt, download the attachment. Then upon application in form 10A or 10AB, procedure for registration as per 12AB. Then commissioner will grant the order for a period of 5 years. If you have made application in clause 1, so clause 1 has already been over because most of the trust have applied during earlier 3-4 years under this clause 1. So if any of the application has been made under 12A, 1AC, clause 2, 3, 4, 5, or 6B, then the commissioner will call for such documents or information from the trust or institution, or make such inquiries as he thinks necessary in order to satisfy himself about the genuineness of the activities of the trust or institution and the compliance of such requirement of any other law for the time being enforced by the trust or institution, as are material for the purpose of achieving its objects. So commissioner will call for all such details before granting the registration.
under these clauses. After satisfying himself, he will pass an order for 5 years. If he is not satisfied, he will cancel the registration after affording a reasonable opportunity of hearing. If it is provisionally approved under 6A, then pass an order in writing provisionally registering the trust or institution for a period of 3 years. So provisional approval will be granted under clause 6 capital A for a period of 3 years from the assessment year from which the registration is sought. Then with effect from 1st April 2025, there has been a relaxation from 5 years to 10 years for certain trust and institutions. So if any of the trust or institution which has made application under clause 1 to 5 of 12A1AC and the total income of such trust or institution without giving effect to the provisions of section 11 and 12 does not exceed rupees 5 crore during the each of the two preceding the previous year in which such application is made, then provision of this subsection shall have effect as if for the period of 5 years, the word 10 years has been substituted. So, if the trust was already registered for 5 years in the assessment year 22-23, now the trust wants to reapply for renewal on or before 30th September 2025. And its gross receipt in immediately preceding two previous year is not exceeding 5 crore, then it will be granted registration for a period of 10 years. So while furnishing the form number 10AB, first of all, we will have to be careful that we will have to furnish the gross receipt of the immediately preceding two previous years. Even if audit of financial year 2024-25 is not complete, but we will have to furnish the information of financial year 24-25 to allow the commissioner to verify that our gross receipt is not exceeding rupees 5 crore in immediately preceding two previous years. Otherwise, our registration will be granted only for a period of 5 years in place of 10 years. In case of form number 10A, the CPC generally grants the registration. Provisional registration is granted by the CPC. If at any point of time, commissioner finds that the assessee has not duly filled in or filled any false or incorrect information, or the form has been verified by the wrong person, then they may cancel the registration granted under 10AC. And in case of application in form number 10AB, the order of registration or rejection shall be in form number 10AD. The commissioner shall pass the order within a period of 3 months calculated from the end of the month in which the application was received under clause 12A1AC1. So that clause is now not applicable because it was applicable for earlier 3-4 years. So 6 months is to be calculated from the end of the quarter in which the application was received in case of 12AB clause 2. So when we will apply for renewal, then the order has to be passed within 6 months from the end of the quarter in which this application for renewal. So if we have applied up to 30th September, our order will have to be passed by the commissioner on or before 31st March 2026. And if we have applied for provisional approval, activities have not commenced, then order will have to be passed within 1 month by the CPC in form number 10A. We will apply, then order will be passed in 10AC. So for claiming exemption under 11 and 12, the books of account has to be maintained, audit has to be get done in form number 10B or 10BB, and ITR has to be furnished as required under section 139 subsection 4A within the time allowed under 139(1) or 139(4). So even if return is furnished up to 31st December, then it will be allowed exemption under 11 and 12. From which year this registration is applicable? So as per section 12A subsection 2, the provisions of section 11 and 12 shall apply in relation to income of trust or institution from the assessment year immediately following the financial year in which application for registration is made as per section 12A 1AC clause 2
3, 4, or 6. So 12A 1AC clause 1 is now not applicable for us because it has already been over. In case of ATG, if the institution of fund specified under ATG 24 is approved under ATG 5 and the period of such approval is due to expire at least 6 months prior to expiry of the said period. So if any of our assessee was registered earlier for 5 years, then we will have to apply for renewal under ATG on or before 30th September under this clause. Where the institution of fund has been provisionally approved at least 6 months prior to expiry of the period of provisional approval or within 6 months of commencement of its activities, whichever is earlier. Where activities of the institution have not commenced, then under clause A, we will have to apply. And if activities have commenced, then for ATG fresh approval, we will have to apply under this clause. For provisional approval, if activities have not commenced, we will have to furnish form number 10 AB. And in case of renewal of registration, or if our trust is already 3 years old, provisionally approved, and 3 years period is going to expire on or before 31st March 2026, then we have to apply on or before 30th September 2025 in form number 10 AB. Or if activities have commenced, then within 6 months from commencement of activities, we have to apply in form number 10 AB. Or if activities have commenced at any time and it was not registered earlier under ATG, then also 10 AB is required to be furnished. Then Commissioner will pass the order in form number 10 AD, granting the registration for a period of 5 years. If any provisional registration is granted, then it will be effective only for the period of 3 years. Then in case of ATG approval, always original will have to be selected, because in case of ATG renewal or ATG approval, there is no option of the condonation. So always select the original, and always there will be assessment year 2026-27. If you are applying during this financial year 25-26, then only 26-27 will be the default assessment year. Then in case of ATG, there will be 3 options. If you are applying for renewal, which was granted registration 5 years for 5 years, then clause 13 will have to be selected. If any of the assessee was granted provisional registration for 3 years, then clause 14 will have to be selected if its period of 3 years is going to expire during assessment year 26-27. And if activities have commenced, but earlier it was not registered under ATG, then code number 14A will have to be selected here. So these details are also to be mentioned here. So income of previous 3 years detail is to be mentioned here: 22-23, 23-24, 24-25. These 3 years income is required to be mentioned here. Grant received, etc., to be mentioned here. Then when you have completed the form ATG in 10 AB, then you will find these things before review. And then through OTP or EVC or DSC, you can verify your form. Then section 11 and 1023 exemption are simultaneously not allowed. So with effect from 1st October 2024, already 1023C registration provision has already been incorporated under section 12A1AC.
So when during the financial year 21-22, many of the trusts which were registered earlier to 1st April 21 had applied for registration because they were earlier registered, so they were to be granted registration permanent and for a period of 5 years. But CPC had done some mistake. So CBDT had came out with a circular number 11/22 dated 3rd June 2022. They told that CPC has wrongly granted the provisional registration. If you are already earlier registered, then kindly treat this as a order of registration in place of order of provisional approval. So they had issued a circular. So we must verify the registration certificate of our clients, even if it were for a period of 3 years. But if you are already registered earlier to 1st April 21, then your time of 5 years will expire up to assessment at 26-27. So we will have to apply for renewal on or before 30th September 25 in such cases. There is a judgment of Delhi High Court that any educational institution cannot charge capitation fee. So they, in this case, CIT versus Maharaja Education Trust, on the basis of judgment of Madras High Court in case of CIT versus Make Public Charitable Trust, 450 ITR 468. On this basis, they have told that if any of the institution is charging capitation fees, which is over and above fees fixed by the government authorities, because in Tamil Nadu there is a law, Tamil Nadu Educational Institution Prohibition of Collection of Capitation Fee Act 1992. So if fees has been collected over and above prescribed under this Tamil Nadu Act, then such trust was denied registration under section 11 and 12. There is a recent judgment of High Court of Chhattisgarh at Bilaspur in case of CIT Raipur versus Adharshila Shikshan Sangh. The order is dated 30th July 2025, in which appeal of the revenue has been dismissed and held that if any of the trust or institution is already registered under section 12AA or 12AB, then at the time of granting registration under section 80G, the CIT exemption cannot make any question regarding genuineness of activities, because while granting the registration under section 12AA or 12AB, they have already verified the genuineness of the activities. So on the basis of that, they should have to compulsorily grant the ATG registration. So this is the recent registration, because we have seen that when we have applied for 12AA registration or 12AB registration, the CIT is verifying the genuineness of the activities. And whenever later on we apply for ATG registration, they again verify the genuineness of the activities. So this judgment of High Court of Chhattisgarh is very much relevant in such cases for us. Then under section 1023BA, many of the religious places in India are governed by the central or state government acts. So if any of the temple or Gurudwara or these are governed by the central or state act, then such central state body are exempted from income tax under section 10 clause 23BA. But there is a proviso under this clause that provided that nothing in this clause shall be construed to exempt from tax the income of any trust, endowment or society referred to therein. So there are two different bodies, governing body and the trust. So governing body being the state government or central government undertaking or any such undertaking which is monitoring the trust or institution. So that monitoring body is exempt, but trust or institution is not exempted. So they will also have to apply in 1023C or 12AB as the case may be. If commissioner finds that there is any specified violation even after granting of the registration, he may cancel the registration. So what are the specified violation? So what are the specified violation? If any of the income derived from property held under trust wholly or in part for charitable or religious purposes has been applied other than for the object of the trust, then
Commissioner can cancel the registration after verifying the trust or institution has profit and gain from business or profession, business, not profession, business, which is not incidental to the attainment of its objective, or separate books of accounts are not maintained. Then also this will be treated as a specified violation, liable for cancellation of registration action by the commissioner. Trust or institution has applied any part of its income from property held under the trust for private religious purposes, which does not endure for the benefit of the public, then also it will be treated as a specified violation to be covered under 12AB subsection 4. Or the trust or institution established for charitable purposes, created or established after the commencement of this act, has applied any part of its income for benefit of any particular religious community. So this clause number D is very much important under section 12AB subsection 4, because during last 3-4 years, when many of the charitable or many of the religious institution applied for registration, then commissioner took the stand that your trust or institution is specified or for a particular religious community. So this clause D is applicable only in case of the charitable purpose. Is if any of the trust or institution is for religious purposes, then 12AB subsection 4 clause D will not come into play. This clause D is applicable only in case of the charitable institution, exclusively charitable institution, not religious. So we will have to verify if activities are not genuine or not being carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was registered, or any of the trust or institution has not complied with the requirement of registration of any other law as referred to in 12A1B clause 1 capital B. So for the achievement of its object, if it has to be registered under any other law and it was not registered under any other law, then also their registration may be cancelled. Or if any of the information furnished by the assessee while obtaining filing the application is false or incorrect, then also registration can be cancelled under section 12AB subsection 4. So merger of charitable trust or institution with effect from 1st April 2025, a new section 12AC has been introduced, which specifies that if any of the trust or institution registered under 12AB or 1023C wishes to merger with any other trust which is registered under 12AC or 12AB or 1023C, then it will not be covered under 115TD. So its income will be exempted. There will not be any violation. But as under this 12AC clause C, they have said that said merger fulfills such conditions as may be prescribed. But till date, no such conditions have been prescribed by CBDT by way of any notification or CBDT circular or rule. Tax on accredited income. So now I will would like to complete within 5-7 minutes. हाँ सर, 2-4 मिनट में कंप्लीट करके ना सर, फिर वो 10 मिनट का उनका लेना है सर. Yes. तो So फिर क्वेश्चन 115 TD. So here only one thing is important, that if any of the trust or institution does not apply for registration as required under section 12A, then they will be attracted under section 115 TD. So say for example, if we are required to apply for renewal on or before 30th September 2025 and we fail to apply for renewal under section 12A clause 1AC, then 1AC clause 2, then 115 TD may be attracted. Or if any of the trust or institution was registered earlier to 1st April 2021 under section 12A or 12AA, but they have not applied for renewal under section 12A1AC, then they may attract under 115 TD. So we must take always care that if our client is already registered, then we must apply for renewal. Otherwise, this will have to face 115 TD maximum marginal rate of tax.
So thanks to all of you for giving me the opportunity to interact with all of you to discuss the issues of 12N ATG renewal. सर मैं आपके 10 मिनट लूंगा क्योंकि वो भी लेट हो रहे हैं, मेरा फोन आ रहा था। 10 मिनट उनका करके ना देन वी विल टेक द क्वेश्चन आंसर सर। Yes, yes, sir. स्पेसिफिक जो I होंगे, am staying here. वैसे आपने सारे कवर कर ही दिए हैं। I am नरेश staying जी, here. Yes, yes. नरेश जी काइंडली मतलब आप स्टार्ट करें सर। नरेश जी, नरेश जी हमारे साथ हैं, ये आपके इनके ना वो एस्ट्रोलॉजी और शेयर मार्केट का आता रहता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि आज हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट था, तो 21 मिनट ऑलरेडी हम ऊपर हो गए, तो आप काइंडली 10 से 15 मिनट में कंक्लूड करें सर, देन वी विल कंक्लूड विद द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। जी टॉपिक इज व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ्स ऑन शेयर मार्केट एज वेल एज ऑन इंडिया विद नमस्ते एस्ट्रोलॉजिकल एवरीवन। इफेक्ट। नमस्ते एवरीवन, सबको नमस्कार। जिंदा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। तो यहाँ पर जिंदा साहब, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली शेयर करना चाहूँगा सभी सज्जनों के साथ, जो इंटरनेट पे डाटा अवेलेबल है उसके मुताबिक है ये। उनका जो जन्म है 17 सितंबर 1950 का है, 11 बजे का जन्म है सुबह। कुछ जगह पे 11:20 आता है, कुछ जगह पे 11 आता है। कुंडली चेंज नहीं होती, अगले 1.5 घंटे पे यदि हम देखते हैं तो कुंडली चेंज नहीं होती। हाँ, दशा में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है 15-20 दिन का, अदरवाइज कुंडली सेम रहती है। तो मोदी जी जो है वो मंगल में बुध की अंतरदशा में गुजर रहे हैं। पहले मंगल में शनि चल रहे थे उनके। अब देखिए, जैसे ही 19/4/2024 से मंगल में शनि आए, उन्होंने जो इलेक्शन में विक्ट्री एक्सपेक्ट की जा रही थी वैसी विक्ट्री वो नहीं ले सके। उसका रीजन ये था कि मार्स एंड सैटर्न बोथ आर एनिमिकल टू ईच अदर, और ये मंगल में शनि है। अभी आज का जो ट्रांजिट है, यहाँ पर देखिए मंगल शनि आमने सामने चल रहे थे। तो एक तो ये चीज हो गई। एक अभी आज की डेट में जो इनकी दशा शुरू हुई है, वो शुरू हुई है मंगल में मरकरी की, बुध की यानी कि। अब बुध उनकी कुंडली में ट्रांजिट में यदि हम देखते हैं, तो बुध उनकी कुंडली में पहले 11 अगस्त से पहले अस्त भी थे और वक्री भी थे। 11 अगस्त से पहले की पोजीशन उनकी बहुत खराब थी। 11 अगस्त के बाद की पोजीशन में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है एज फार एज प्लैनेटरी पोजीशन इज कंसर्न। क्योंकि वो लीड करते हैं, तो हमें उनकी कुंडली को ही देखना पड़ेगा कि उनके नेतृत्व में इंडिया किस तरीके से जाएगा, किस तरह की चीजें हम लेंगे। और यहाँ पर ये देखते हैं ना, ये जो 12 नंबर जहां पर लिख रहा है, सबको इजीली समझ आ जाएगा। राहु है उनके नेटल चार्ट में, और आज की डेट में 12 नंबर के ऊपर से शनि ट्रांजिट हो रहा है, यानी कि उनके नेटल चार्ट में राहु के ऊपर से शनि का ट्रांजिट है। ये बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड का भाव होता है। जब इस तरह का पीड़ा आ जाती है कुंडली में 5th हाउस के ऊपर, तो इवेंचुअली हम डिसीजन मेकिंग में गलती कर जाते हैं। और मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि कहीं ना कहीं संभव मोदी जी इस मामले में डिसीजन मेकिंग में थोड़ी बहुत गलती ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका हमें थोड़ा सा खमियाजा हमारी मार्केट को भी भुगतना पड़ रहा है और हमें भी भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जो पॉलिटिकल डिसीजन था उनके लिए कि ट्रम्प साहब ने इंटरवेंशन की है या नहीं की है इंडिया पाकिस्तान का, वो जो हमारा कन्फ्लिक्ट हो गया था उसको रोकने में, उन्होंने संसद में खड़े होकर क्लियर कट बोल दिया कि किसी भी विदेशी नेता का हाथ नहीं था। एज ए मीडिया पर्सन हम भी समझते हैं कि उसमें काफी कंट्रीज ने मीडिएट किया था उस समय। खासतौर पर यूएई का भी रोल था उसमें, जिसने पाकिस्तान के साथ मीडिएट किया था। बातचीत अमेरिका के लेवल से भी हो रही थी, बैक चैनल खुले हुए थे सारे, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट जो आती हैं या जो समझ में आता है इंटरनेशनल मीडिया से या रॉयटर्स की जो रिपोर्ट आती है, तो वहां पर लग रहा था कि कुछ ना कुछ इंटरवेंशन है। लेकिन ट्रंप इतने डेस्परेट थे कि वो चाहते हैं कि उन्हें ग्लोबल पीस प्राइज मिल जाए। इंडिया ने रिकमेंड नहीं किया, मुनीर ने रिकमेंड कर दिया, नेतन्याहू ने रिकमेंड कर दिया, बाकी कंट्रीज भी लगी हुई हैं। अभी वो सरपंच बने हुए हैं दुनिया के, और यूक्रेन और रशिया की वार रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। 15 को मीटिंग है, 15 की मीटिंग मुझे लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव रहेगी। उसका रीजन ये है कि सबसे पहले तो उस मीटिंग से पहले अभी आधा घंटा पहले ट्रंप के सोशल मीडिया के ऊपर, ट्रूथ सोशल के ऊपर एक उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि वो 5 यूरोपियन लीडर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जेलेंस्की भी वहां पर ज्वाइन कर रहे हैं, तो जेलेंस्की का पक्ष पहले सुना जा रहा है। तो 15 की मीटिंग के ऊपर बड़ा कुछ जो है वो डिपेंड कर रहा है इंडिया के लिहाज से भी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ उन्होंने लगाए हैं, वो उसका बेस उन्होंने यही बनाया है कि जो इंडिया है वो रशिया से तेल इंपोर्ट कर रहा है, और यदि रशिया और यूक्रेन का वॉर रुक जाता है या सीज फायर की अनाउंसमेंट हो जाती है, किसी भी तरीके से कोई ना कोई एग्रीमेंट बन जाता है, तो इवेंचुअली वो 25% की रिलीफ तो हमें इमीडिएटली हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वो हमें मिल जाएगी। हालांकि ट्रंप का कोई पता नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो कब क्या कर दे, क्योंकि पिछले जब से उन्होंने चार्ज संभाला है, पता नहीं कितने उन्होंने अपने जो ऑफिस ऑर्डर हैं या जो जारी करते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिसको बोलते हैं, वो कितने ही वापस ले चुके हैं। तो ये भी अल्टीमेटली वापस हो जाएगा।
उसका रीजन सबसे ज्यादा ये समझ में आता है कि मोदी साहब की कुंडली में एक पोजीशन 11 अगस्त को इम्प्रूव हो गई है, मरकरी का डायरेक्ट होना और मरकरी का उदय होना, जो कि वो दशानाथ है, अंतरदशानाथ है। इसलिए मोदी साहब मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा लिबरल रवैया अपनाएंगे बातचीत में, और हमें अपनाना भी चाहिए मुझे लगता है। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो 2 मिनट पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आई है हमारे पास, क्योंकि मैं मीडिया पर्सन हूं तो सारी चीजें चलती रहती हैं साथ साथ। उनके जो वित्त मंत्री हैं, जो वहाँ वहां पर जिनको हम फाइनेंस सेक्रेटरी बोल देते हैं, स्कॉट बेंसेंट है, वो उनका स्टेटमेंट आया कि इंडिया थोड़ा सा जिद्दी रवैया अपना रहा है, लेकिन वो होपफुल है कि वो बातचीत चल जाएगी। ये उस बातचीत के बिल्कुल उलट है जो ट्रंप ने बोला था कि हम बातचीत करेंगे ही नहीं। तो ये एक थोड़ा सा एक सिग्नल आया कि वो पॉजिटिव है, वो ऑप्टिमिस्टिक है कि बातचीत होगी। और 21 दिन का जो हमें विंडो दिया गया है, 25% एक्स्ट्रा जो टैरिफ लगाया है, उसकी विंडो की जो लास्ट डेट है वो 27 अगस्त बनती है। 25 अगस्त को उनकी टीम यहाँ पर आ रही है, जो हमारे साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो हो रहा है, जो एफटीए जैसा हमारा यूके के साथ हुआ है वैसा ही। तो इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि चीजें 15 अगस्त के बाद, जैसे ये पुतिन वाली मीटिंग अवर होगी, हालांकि उसमें फाइनल कंक्रीट डिसीजन नहीं निकलेगा, लेकिन बातचीत जो शुरू हुई है तो इवेंचुअली बातचीत आगे निकलेगी। हो सकता है पीस ऑफ लैंड, जिस तरीके से ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि लैंड एक्सचेंज होगी इस मामले में तो चीजें सेट हो जाएंगी, हो सकता है वो चीज ना भी हो। लेकिन ये इतना जरूर है कि वो जो बातचीत होगी उसमें कुछ ना कुछ फाइनेंशियल टर्म्स सेट होंगी। रशिया यूएस के जो रिलेशन है, जो बिल्कुल वर्स्ट पोजीशन पे खड़े हुए थे, वहां से चीजें थोड़ी सी वापस होनी शुरू होंगी। क्योंकि जिस दिन हमारे डोभाल साहब, अजीत डोभाल साहब मिलके आए हैं पुतिन को, उसी दिन उनके यूएस के स्पेशल एनवॉय जो रशिया में है, उनकी 3 घंटे लगातार मीटिंग हुई है पुतिन के साथ 1-to-1। उसमें जो डिस्कशन होनी है यूएस प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग के दौरान, उसका मसौदा तैयार हो गया है ऑलरेडी। तो इसीलिए ट्रंप ने ये ट्वीट किया था कि चेंज ऑफ जो लैंड है, या एक्सचेंज ऑफ लैंड जो होगा यूक्रेन और रशिया के बीच में, इस तरह का कोई फार्मूला उन्होंने तैयार कर लिया। तो खैर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, मीडिया की भी निगाहें टिकी हुई हैं। एज एन एस्ट्रोलॉजर इसको जैसे यदि मैं ऑब्जर्व करता हूं, तो ये हफ्ता जो जहां पर हम खड़े हैं 11 अगस्त से 14 अगस्त का, मेरे यूट्यूब पेज के ऊपर भी एक वीडियो था, मैंने बताया था कि निफ्टी यहाँ से बॉटम कर गया है और यहाँ से अब निफ्टी में वापसी शुरू हो जानी चाहिए। उसका रीजन ये है कि मरकरी ट्रेड का कारक होता है, और मरकरी ट्रेड का कारक होने के कारण अस्त भी था और जो है वो वक्री भी था। अब ये भी सवाल मन में उठ सकता है, सारे सीए मित्र हैं, कि क्या वो पूरी दुनिया में हमारे लिए ही था? तो बिल्कुल हमारे लिए था। उसका रीजन ये है कि इंडिया की कुंडली में वो सप्तम भाव में आ गया था। अदरवाइज हमने देखा कि जुलाई में ही ये एफटीएससी जो यूके का इंडेक्स है उसने टॉप अप किया। जुलाई में ही आपका S&P 500 टॉप कर गया, जापान टॉप कर गया, इवन हमारा पड़ोसी 18 जुलाई को पिछले महीने कराची 100 वो भी टॉप कर गया, मीन मरी हुई इकॉनमी, उसका इंडेक्स टॉप कर गया। हमारा इंडेक्स जो है वो लगातार गिर रहा था। तो मुझे लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं बॉटम टच कर चुके हैं, और अगला हफ्ता जो है वो रिकवरी का हफ्ता है। मीन यहाँ से हमने एक बार तो 5 हफ्ते का रेड कैंडल बनाने के बाद चार्ट पे देखते हैं तो 5 हफ्ते का रेड कैंडल बनता है, और छठा हफ्ता मुझे लग रहा है कि हम कल भी ग्रीन में बंद करेंगे। जिस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है और जिस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे एंड से भी आ रही है, जो खबरें छन छन के आ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं अमेरिका में अगले महीने, और वहां पर उन्होंने यूएन की किसी मीटिंग में, यूनाइटेड नेशन की किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट करना, और वहां पर मोदी साहब इनवाइट करेंगे ट्रंप को क्वाड की मीटिंग के लिए। क्वाड की मीटिंग अक्टूबर में हो रही है इंडिया में। तो चीजें जो है वो बैक चैनल के ऊपर या डिप्लोमेटिक चैनल जो खुले हुए हैं वहां से सेटल होने की तैयारी हो रही है, और ये सारा कुछ पिछले 2-3 दिन में ही हुआ है, जब से मरकरी की पोजीशन सुधरी है। तो मरकरी की पोजीशन सुधरना, और 16 अगस्त को जिस दिन संक्रांति है हमारे, उस दिन सूर्य की पोजीशन चेंज होगी, वो भी हमारे लिए फेवरेबल है। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीजें अब आगे हम देखेंगे कि थोड़ा सा मार्केट भी सुधरेगा। इकोनॉमी, जहां तक हमारी इकोनॉमी की बात है, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो इस डिस्कशन से 10-15 मिनट पहले स्टैंडर्ड एंड पुअर जो रेटिंग कंपनी है अमेरिका की, उसकी एक कैलकुलेशन आई है टैरिफ को लेकर ही। उन्होंने बताया है कि टैरिफ का इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, और उनकी सॉवरन रेटिंग जो है वो कायम रहेगी। मीन उनको भी लगता है कि यूएस को भी लगता है कि रेटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। दो चीजें हैं जिसपे ट्रंप फंसे हुए हैं, एक तो हमारा फार्म एंड डेयरी सेक्टर खोलना है, वो चाहते हैं कि ये खोला जाए। कल ही उन्होंने ट्वीट भी किया था कि हमारे पास बहुत सारा सोयाबीन है और चाइना चाहे तो हमसे ले ले, वहां पर सोयाबीन का कुछ क्राइसिस है। तो हमारे एंड पे यदि हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है,
और ये पॉलिटिकली बड़ा सेंसिटिव इशू है। यदि एग्रीकल्चर इकोनॉमी को खोल दिया जाता है यूएस के लिए और डेयरी सेक्टर को खोल दिया जाता है तो हमारे छोटे किसान को बहुत नुकसान हो सकता है। ये एक जो मुद्दा है जिसपे ट्रेड की बात पूरी फंसी हुई है, बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा है। अदरवाइज जो डिस्कशन हुई थी फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप के साथ, उसमें एक ये था कि सरकार जो है वो रशिया से तेल की सप्लाई कम करे और यूएस से बढ़ाए। तो इवेंचुअली हमने जुलाई अगस्त में थोड़ा सा रशिया से कम कर दिया है और इस बात पर सहमति बन भी गई थी। दो पॉइंट से जिन पे सहमति बन गई थी। लेकिन ये वाला डेयरी और ये वाला एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है, इस पे हम फंसे हुए हैं और वो चाहते हैं कि हम थोड़ा सा इस पे लिबरल हो जाए, उनको उनके लिए बाजार खोल दें। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही डिसीजन है सरकार का, यहाँ पर खोलना भी नहीं चाहिए। हाँ, कुछ चीजें ईगो हर्ट कर गई है। वो चाहते थे कि थोड़ा सा उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड कर दिया जाए, या ये चीज हम मान लें कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा सीज फायर हुआ है उसमें अमेरिका की भूमिका थी। तो वहां से चीजें एक्चुअल में बहुत दूर निकल चुकी हैं, वहां से वापसी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि संसद में खड़े होकर एक बयान दे दिया गया है जिसके ऊपर, और उस बयान के बाद ही आप देखिएगा 25% टैरिफ वाला, एक्स्ट्रा टैरिफ वाला जो और पेनल्टी वाला जो नोटिफिकेशन उनका आया या उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, वो उसके बाद ही सारा आया है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेड से ज्यादा ईगो का मसला हो गया है ट्रंप और मोदी के बीच में। और खैर ट्रंप ने इसको ज्यादा उसमें ले लिया। हमारे एंड पे भी चीजें थोड़ी सी बेहतर तरीके से डील हो सकती थी। एज ए जर्नलिस्ट मैं ये सोचता हूँ कि मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी सी बेहतर तरीके से डील हो सकती थी, लेकिन हमने थोड़ी सी शायद गड़बड़ हमारे एंड से भी हो गई है, क्योंकि इंग्लिश में बोलते हैं ना, इट टेक्स टू टू मेक ए रो। तो ये मुझे लग रहा है कि अब इनको भी समझ आ गया है कि सारी दुनिया के साथ ट्रेड डील हो रही है और हमें उस कैटेगरी में रख दिया ब्राजील वाली 50% टैरिफ वाली। हालांकि यदि मैं स्टॉक मार्केट को एनालाइज करूं इसको टैरिफ को, तो बहुत ज्यादा कंपनीज ऐसी नहीं है जिनके ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। हमारी जो है वो जेम एंड ज्वेलरी ज्यादा डिस्टर्ब होगी, ये लग्जरी आइटम में आता है। हमारा टेक्सटाइल ज्यादा डिस्टर्ब होगा, हमारी इंजीनियरिंग हद कुछ हद तक डिस्टर्ब हो सकती है। फार्मा उसमें इंक्लूडेड नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक उसमें इंक्लूडेड नहीं है। एप्पल वाले भाई साहब जाके ट्रंप को मिलाए, उन्होंने $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस कर दिया, तो इंडिया में जितना भी एप्पल का फोन बनता है उसके ऊपर टैरिफ नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं और इनमें बहुत सारी कंपनीज जो है वो लिस्टेड नहीं है मार्केट में। मार्केट को खतरा सिर्फ इस चीज का है कि कहीं इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बहुत ज्यादा हद तक खराब ना हो जाए। तो जितना लो जाना था मुझे लगता है कि चले जा चुके हैं, यहाँ से अब रिकवरी ही होगी। एस्ट्रो साइकिल भी यही बता रहा है। और एस्ट्रो साइकिल में आज जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो हुई है, जुपिटर अपने नक्षत्र में आ गए हैं। जुपिटर 13 जून से राहु के नक्षत्र में थे। गुरु और राहु आपस में निमकल हैं। जब जुपिटर राहु के नक्षत्र में आता है या केतु के नक्षत्र में आता है तो बाजार टूट जाता है नॉर्मली। तो 13 जून के बाद से हम देख रहे हैं कि बाजार लगातार डिक्लाइन साइड पे है और यहाँ पर अब आज के बाद से रिकवरी की हम उम्मीद कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यदि ये रिकवरी भी आएगी तो बहुत शार्प आएगी और हम जल्द ही जो हाई हमने सितंबर में लास्ट ईयर टच किया था, शायद 26,277 का हाई था, 26 सितंबर की डेट थी, वो दोबारा हम रिक्लेम कर सकते हैं अगले महीने में या इस महीने के एंड में भी वो लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो आगे बाजार ठीक है, लेकिन मुझे 18 अक्टूबर के बाद बाजार ठीक नहीं लगता। 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर बाजार के लिए सेंसिटिव डेट्स हैं। यहाँ पर बाजार में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। एक और चीज जो मुझे लगता है कि हो सकती है, मिडिल ईस्ट में दोबारा क्राइसिस हो सकता है। जैसे ही सूर्य राशि बदलेंगे 16 सितंबर को, उसके बाद चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं। अगले महीने सूर्य को ग्रहण भी है। ईरान वाला एपिसोड मुझे लगता है कि दोबारा ना खुल जाए। वहां पर मिडिल ईस्ट में क्राइसिस होता है तो फिर दुनिया में थोड़ा सा संकट आ सकता है। बाकी क्रूड मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी और डाउन जाएगा, क्योंकि ट्रंप का पूरा जोर लगा हुआ है कि क्रूड जो है वो नीचे आए, ताकि जो इम्पैक्ट टैरिफ लगने के कारण यूएस की आम जनता के ऊपर जा रहा है, सीधा चीजें महंगी हो रही हैं, उसको कंपनसेट किया जा सके एनर्जी प्राइसेस के साथ। तो हमने देखा है कि पिछले लगभग एक महीने में $80 का क्रूड जो है वो $65 के ऊपर रह गया। आज का रेट उसका $65 के आसपास का था। और एक चीज और मुझे ग्लोबली लग रही है, बहुत सारे लोग सीए हैं, बहुत सारे लोग डेरिवेटिव देखते होंगे। मुझे लग रहा है कि आगे जाकर, अभी नहीं, आगे जाकर ट्रंप साहब को करेंसी जो है वो डिवेल्यूएट करनी पड़ेगी। उसका रीजन भी जो है वो थोड़ा सा इकोनॉमिक भी है और थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल भी है। एस्ट्रोलॉजिकली यदि हम देखते हैं तो शनि जब 12-1-2 में आते हैं तो करेंसी से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट होती हैं। हमने 1970 में देखा था, 1971 70 में निक्सन थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने डॉलर को 75% डिवेल्यूएट किया था। उसके बाद हम 99 में देखते हैं तो यूरो की लॉन्चिंग हुई थी। 99 में ही, 98 या 99 में ही रशिया का रूबल जो है वो डिवेल्यूएट हुआ था। 1967 में शनि 12 राशि में थे शायद, उस समय जो स्टर्लिंग पाउंड है उसको उन्होंने डिवेल्यूएट किया था।
तो बहुत बड़े बड़े मुल्कों की करेंसी जो है वो डिवैल्यूट होती है जब शनि 12 पे होते हैं। शनि 29 मार्च को 12 पे आए हैं और अगले साल 15 डिग्री के आसपास क्रॉस कर जाएंगे। जब नीचे भिलाषी हो जाते हैं शनि, तो चीजें जो है वो ज्यादा ड्रास्टिक चेंज लेके आती है, खासतौर पर करेंसी वाले लेवल मामले में। तो मुझे लग रहा है कि यूएस की करेंसी भी डिवैल्यूट होने जा रही है। आप लोगों में से बहुत से लोग इन्वेस्टेड होंगे मार्केट में। मेरी आपको राय है कि अपना एक पोर्शन गोल्ड और सिल्वर में जरूर रखिए, खासतौर पर गोल्ड में। गोल्ड जो है यहाँ से बहुत जबरदस्त रैली देने वाला है और गोल्ड हम अगले 5 साल में $10,000 को देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले 7 साल एस्ट्रो साइकिल के लिहाज से दुनिया के लिए अच्छे नहीं है। जब जब जियोपॉलिटिकल सिनेरियो डिस्टर्ब होता है, गोल्ड हमेशा बढ़ता है। हमने 1970 में देखा था कि $34 का गोल्ड 1980 में जाकर $668 हो गया था। हमने 2000 में देखा था कि 2000 में $256 का गोल्ड 2010 में $1836 हो गया था। तो हमने दोनों बार देखा जब ये साइकिल था सैटर्न का, कि गोल्ड जो है वो अचानक शूट अप कर जाता है। तो अभी जो साइकिल शुरू हुआ है, मुझे लग रहा है कि गोल्ड यहाँ से बहुत ज्यादा चलेगा। एक पोर्टफोलियो का एक पोर्शन लगभग 20% के आसपास गोल्ड में जरूर रखना चाहिए। मीन एज एन एस्ट्रोलजर और एज एन इकोनॉमी का समझ जानकार मान लीजिए छोटा मोटा, क्योंकि मैं 10 साल रहा हूँ सीएनबीसी में। तो सीएनबीसी में काम करने के कारण थोड़ी सी इकोनॉमी पे, थोड़ी सी मार्केट के ऊपर समझ है। 17 साल से करीब मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ और 25 साल से मैं करीब मीडिया में हूँ। जिंदा साहब बहुत पुराने मित्र हैं, 2005 से हम एक दूसरे को जानते हैं और लगातार जिंदा साहब की सेवाएं भी लेते रहते हैं, जिंदा साहब हमारी सेवाएं लेते रहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि और अगला साल मैं आ रहा था कि बाजार जो है एक करेक्शन होती है, क्रैश होता है। अगला साल नवंबर जो है, अब इक्विटी मार्केट में आप नहीं रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेंगे। नवंबर के बाद जो बाजार क्रैश होगा, फिर आपको 2032-33 में वही लेवल दोबारा मिलेगा जो हम पीक कर जाएंगे नवंबर 2026 में। ये बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। जैसा क्रैश हमने 92 में देखा था हर्षद मेहता के स्कैम के समय, जैसा क्रैश हमने 2001 में .com बबल के समय देखा था, जैसा क्रैश हमने 2008 में देखा था, जैसा क्रैश हमने 2020 में देखा था। 2020 तो खैर बहुत छोटा पीरियड था, 13 फरवरी 2020 को मार्केट ने डिप लेना शुरू किया था और लगभग 25 मार्च के आसपास वो बॉटम बना गया था। उसके बाद बाजार रैली कर गया था, लेकिन इन दिनों में भी बाजार ने 40% का डिक्लाइन दे दिया था। लेकिन जो इससे पिछले वाले क्रैश आए थे, एक बार बाजार 52% टूटा था, एक बार 62% के आसपास टूटा था। तो सेम सिनेरियो इमर्ज होता हुआ एस्ट्रो साइकिल में आगे नजर आ रहा है मुझे। लेकिन ये सिनेरियो नवंबर 2026 के बाद है। धीरे धीरे से जून 2026 के बाद इक्विटी से थोड़ा थोड़ा निकलेंगे। यदि आपके कुछ प्रॉफिट है, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड होंगे, कुछ लोगों के पास इक्विटी में शेयर्स होंगे, वो थोड़े थोड़े स्क्वायर ऑफ करने शुरू करिएगा। बहुत ज्यादा हैवी पोजीशन इक्विटी में नवंबर 2026 में मुसीबत में फंसा सकती है। मुझे लगता है कि वहां पर चीजें स्क्वायर ऑफ जरूर करनी चाहिए। जो प्लेनेटरी पोजीशन इंडिकेट कर रही है, सेम प्लेनेटरी साइकिल है जो 1992 का था, जो 2000 का था, जो 2008 का था, जो 2020 का था। सेम प्लेनेटरी साइकिल नवंबर 2026 में है और डेट है 2 नवंबर 2026। उसके बाद से यदि बाजार टूटना शुरू होता है तो ये डिक्लाइन एक तरफा होगा और अगले 12 महीने 10 महीने तक के लिए जा सकता है। क्योंकि जब 2008 में बाजार गिरना शुरू हुआ था तो 8 जनवरी से बाजार गिरना शुरू हुआ था, 27 अक्टूबर को उसने बॉटम किया था। लेकिन उसने दोबारा जो 8 जनवरी 2008 का हाई था, वो उसने दिसंबर 2013 में रिक्लेम किया था। इसी तरह जब 2000 में बाजार टूटा था, जनवरी से टूटना शुरू हुआ था, 2001 सितंबर में उसने बॉटम किया था, फिर दिसंबर 2003 में उसने वही लेवल जो है वो सेम रिक्लेम किया था। इट टुक 47 मंथ टू रिक्लेम द सेम लेवल एंड इन अनदर केस 2008 वाले मामले में इट टुक 71 मंथ टू रिक्लेम द सेम लेवल। और उसके अलावा जब 92 में बाजार टूटा था तो इसने बॉटम लगभग 10 महीने में कर लिया था और उसको 20 महीने लगे थे टोटल सेम लेवल को रिक्लेम करने में। उस समय निफ्टी नहीं हुआ करता था, उस समय सेंसेक्स हुआ करता था हमारा। तो बहुत सारी चीजें हैं बाजार को लेकर। ये टॉपिक शायद लंबा हो जाएगा, लेकिन इवेंचुअली यदि हम ये सोच रहे हैं कि ट्रेड डील में हम बहुत ज्यादा फंस जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि हम निकल जाएंगे। और अगले दिनों में जो बातचीत होगी, जिस तरह का सिग्नल, जिस तरीके की डिप्लोमेसी के जरिए हम चीजें हम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या जिस तरीके की वाइब्स अब यूएस की तरफ से आनी शुरू हुई हैं, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी। ये जो अग्रेशन था वो अग्रेशन अवर है। हमने देखा कि ट्रंप का कोई रिएक्शन नहीं आया पिछले 6-7 दिन से, नहीं तो हर दूसरे दिन ट्रंप का इंडिया को लेकर ट्वीट आ रहा था। अभी वो चुप है, उनको लग रहा है कि उन्होंने अपने एंड से जो करना था कर दिया है। अब हमारे एंड से थोड़ा सा स्टैंड थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बहुत सारी डेवलपमेंट होंगी। पुतिन और जो ट्रंप की मीटिंग है उसका आउटकम मुझे लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव रहेगा और वो अल्टीमेटली दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा, दुनिया भर की पीस के लिए अच्छा रहेगा।
तो यदि किसी का कोई पर्सनल सवाल है तो वो भी हम ले सकते हैं यहाँ पर। हालांकि जिंदा साहब ने मुझे बोला है कि टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, तो मैं लिमिटेड टाइम में ही अपनी बात जो है वो रखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। चलो थैंक यू सर, थैंक यू मेगा, क्योंकि ऑलरेडी आज लेट हो गए। तो हालांकि अभी क्वेश्चन मेहता जी के पेंडिंग पड़े हैं तो तभी बीच में रोका। तो थैंक यू वेरी मच नरेश जी। थैंक यू जिंदा साहब। बाकी जितने भी सज्जन हैं, मेरा यूट्यूब पे पेज है एस्ट्रो नरेश, वहां पर आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बाजार को लेकर मैं लगातार लाइव भी आता रहता हूँ, मैं वीडियो भी पोस्ट करता रहता थैंक यू, प्लीज फॉलो द चैनल हूँ। थैंक एंड यू। यू विल गेट, जो मेंबर इंटरेस्टेड हैं तो वो नरेश जी का यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। वहां पे इनकी डेली वीकली सब वीडियोस आती रहती हैं। थैंक यू सर, जिंदा थैंक यू साहब, नरेश बहुत जी, बहुत थैंक यू बहुत बहुत वेरी मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर अभी क्वेश्चन आंसर पहले हम हैंड रेज वाले ले लें मेहता सर। हाँ, यस सर। एक मिनट, हैंड रेज अगर किसी मेंबर का है तो पहले वो लेके देन क्यों, पहले वो अपने हैंड रेज वाले ले लें, देन वो क्वेश्चन आंसर हम वो दूसरे लेंगे। सबसे जिंदल पहले साहब, सर वैभव खन्ना जी का है। जिंदल साहब, मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ? हाँ हाँ जी हाँ जी सर। सर, बोलिए सर। जैन साहब बोलिए, सुभाष जैन साहब। राजेश जी, एक क्वेश्चन जो थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ लुधियाना में हुआ था सेमिनार, उसमें ये चल रहा था, काफी हॉट टॉपिक रहा। जो अभी न्यू नोबल के केस में जजमेंट आई कि जो बुक शॉप या ड्रग स्टोर्स है हॉस्पिटल में, बुक शॉप स्कूल्स में है, दे आर दे आर द एंसिलरी बिजनेस एक्टिविटी विच कैन बी अंडरटेकन बाय द स्कूल और बाय द हॉस्पिटल। तो वो 11(4)(a) में वो फॉल करेंगी, तो क्या उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग रखनी पड़ेंगी? फॉर द पर्पज ऑफ 5 करोड़, वो नेट प्रॉफिट कंसिडर करें या ग्रॉस रिसीट सेल कंसिडर की जाए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली, क्योंकि इससे काफी सारे इम्पैक्ट आते हैं उसके ऊपर, फिगर्स के ऊपर। सर उसके लिए ओनली उसकी इनकम को कंसिडर किया जाना चाहिए, क्योंकि बिजनेस की तो बुक्स ऑफ वैभव अकाउंट स्पीकर देते सेपरेट जो है। हो सकता कर दे यार माइक पे। बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो सेपरेट है ऑलरेडी, है ना। तो उससे जो इनकम हो रही, बट दैट ओनली इनकम इज रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड। नेटिंग, बिकॉज ड्रग स्टोर है विच इज अब मेरी बारी गई हूँ। ड्रग स्टोर विच इज रनिंग इन द हॉस्पिटल इटसेल्फ, एंड उसकी जो सप्लाई है वो भी सारी हॉस्पिटल के इन पेशेंट्स के लिए है, मान लो। तो उस केस में भी ड्रग स्टोर की बुक्स ऑफ अकाउंट अलग रख के 44(a) भी लगेगा उसके ऊपर। तो हाँ, क्या आर यू विद मी ऑन दैट? 44 AB लगेगा, इसलिए वो उसकी लिमिट चूंकि 44 AB के लिए कंसिडर होगी, तो वो उसकी केवल इनकम यहाँ पे कंसिडर की जाएगी बस। ठीक है। एक सर क्वेश्चन और है, जो एक स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी है जहाँ क्लोज 6 के लिए, यस कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें ये कहा गया कि व्हेन यू हैव रिसीव डोनेशन इन द बैंक, इट इज स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी। यस यस। कुछ केस में ये कहते हैं नहीं, जब कोई एक्टिविटी करोगे आप जो टू इन अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको एक्टिविटी माना जाएगा। तो 6 महीने का जो वो पीरियड है ना, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है 6(a) में आना या 6(b) में जाना, उसके लिए आपकी क्या राय है इसमें? सर इन माय ओपिनियन देखिए, डोनेशन मिला तो दैट इज ऑल्सो द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी। राइट सर। क्योंकि किसी ने अगर मान लिया 50 लाख रुपए का डोनेशन दे दिया और हमने कहा हमारी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई और एसएससी ने रजिस्ट्रेशन अप्लाई भी नहीं किया, तो वो तो 50 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। सो व्हाट्सएवर एनी एक्टिविटी टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, दैट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्टिविटी। राइट, थैंक यू कोई सर। भी एक्टिविटी हो दैट इज एक्टिविटी, क्योंकि एक्टिविटी को डिफाइन कहीं नहीं किया, पर डोनेशन आना या कोई सा भी एक्सपेंसेस होना, दैट विल स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी। राइट राइट सर, थैंक यू। बट सर इस केस में डिपार्टमेंट का क्या व्यू है, क्योंकि उसी को हम लेके ही इस इशू के ऊपर चल सकते हैं कि जैसे जैन साहब ने कहा कि डाइवर्जेंट व्यूज हैं। तो क्या ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बेसिकली तो जब तक आपके ऑब्जेक्टिव्स की एक्टिविटी जो है वो शुरू नहीं हुई, तब तक हम, वो तो एक स्टार्ट ऑफ दी है कि आपने कोई भी एक्टिविटी करनी है, उसके लिए पैसे तो चाहिए ही ना जी। तो पैसे आएंगे तो आप अपना ऑब्जेक्ट अचीव कर सकेंगे। तो क्या डिपार्टमेंट क्या व्यू ले रहा है सर इसमें? सर डिपार्टमेंट वही, क्योंकि अगर किसी को डोनेशन रिसीव्ड हो गया तो वो तो एक्टिविटी हैज बीन कमेंस्ड, क्योंकि जो डोनेशन दिया है सामने वाले ने वो टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट ही दिया है। उसने डोनेशन आपके ऑब्जेक्ट्स को देखकर ही कोई भी व्यक्ति आपको डोनेशन देता है, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे वो चैरिटेबल हो। सो व्हाट्सएवर एक्टिविटी, पर जनरली कभी क्या होता है कि किसी ने केवल ट्रस्ट डीड बना ली, इवन बैंक अकाउंट भी ओपन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो उसको हम कहते हैं कि एक्टिविटी इज नॉट स्टार्टेड। वो सब चंडीगढ़ चंडीगढ़ ऑफिस भी ऐसे ही ले रहा है कि यस, डोनेशन अगर आ गई तो एक्टिविटी शुरू हो गई। दैट इज हाँ, यस कंसीडर्ड टू यस बी यस, स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी। सर्टेनली यस। That means trigger point should be the receipt of the donation. Certainly, हाँ it will be prior to the doing any objective purposes.
तो उसके ही विद इन 6 मंथ्स जो है हाँ वो बिल्कुल। रीअप्लाई जो वो करना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन वो जो चार्ट ऑफ एक्टिविटी। बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपन जो देखते हैं ना, इंडस्ट्रीज के अंदर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वो दैट इज डिफरेंट। हो गया। हाँ प्रोडक्शन ऑफ certainly। बिजनेस कि हाँ प्रोडक्शन ऑफ जी वैभव बिजनेस, जी, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। वैभव खन्ना जी। हाँ जी वैभव जी अपना क्वेश्चन पूछिए। देन अनुराग अग्रवाल जी, सर वैभव मैं खन्ना जी, हाँ जी अनुराग जी, देन सर पहले सर फर्स्ट वैभव जी। नमस्ते सर। सर मेरा ना एक केस है एक मिनट अनुराग जी, सर वैभव मेरा जी का क्वेश्चन है पहले। हम वैभव भैया जी, हाँ जी मैं हाँ जी वैभव वैभव का जी बोलिए। फादर बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। सर ऐसा है कि फॉर्म 10 AB में जब एनेक्सर्स लगाते हैं तो उसमें पॉइंट नंबर 8 में अटैचमेंट है 11(4) की। मैं बिजनेस नहीं कोई करता, सिर्फ स्कूल है। तो अगर मैं उसको अटैचमेंट नहीं लगाता तो वो फॉर्म वो कहता है जी अटैचमेंट लगाओ जी। नहीं 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 नहीं, अगर देखिए आपका स्कूल चल रहा है, कोई बिजनेस नहीं है, तो उसमें एक्चुअली क्या, जब आपने यूटिलिटी पे फिलअप किया होगा ना, गलती से आपने उसको क्लिक कर दिया होगा, तो आपको वो क्लिक करने के कारण वो ऐसा कंप्यूटर ने मान लिया कि आपका कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी है, तो उसको वापस आपको कैंसिल, वो वाला टैब को, ओनली जो टैब 8 है उसको कैंसिल करके बैक जाना होगा। बैक जाने के बाद वापस आपको भरेंगे तो वो नहीं मांगेगा, उस पर क्लिक मत कीजिए बस। कैन यू गाइड मी वेयर आई at what point I have taken? देखिए अगर आपको सर, अगर आपकी कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, नहीं है। बिजनेस एक्टिविटी नहीं है ना, तो आपको वहां पर क्लिक नहीं करना है। जो भी टैब आपसे नहीं, रिलेटेड कहाँ नहीं, पे क्लिक नहीं करना था? वहां पे उस पे जो वो वाला था ना, एड डिटेल्स वाला जो ब्लू वाला टैब आता है उसमें, यूटिलिटी के अंदर ब्लू टैब आता है कि एड डिटेल्स, तो एड डिटेल्स पर आप अटैच टिक नहीं, डिटेल्स। हाँ एड एड डिटेल्स है ना, तो वहां पर आपको टिक नहीं करना है। तो मैं अगर टिक नहीं करता, मैं वही हाँ, तो वहां फिर कुछ भी नहीं आपसे मांगेगा। बता मैंने रहा हूं, तो किया वो ना, मेरे मैंने को भी रेड कल मार्क्स आ परसों जाता फॉर्म है, यू फाइल हैव किया। टू अटैच। मैंने सर परसों मैंने मैं खुद में फॉर्म फाइल किया, तो हमने भी क्या करा, एक मैं बार टिक कर दिया तो उसने कहा कि आपको यहाँ अटैच करना पड़ेगा। फिर मैंने कैंसिल करके बैक किया तो फिर नहीं, उसने इसका ऐसा तो नहीं है मैंने ऊपर। आपकी आवाज नहीं आ रही है वैभव जी। ऐसा है सर कि मैंने उसको बिजनेस का है ना, 11 फॉर बिजनेस कैंसिल और किया, दोबारा भी किया आज अंडरटेकिंग। वाइल स्पीकिंग, मैंने तब भी किया, बट इट इज नहीं नॉट। होगा सर, आप चाहे तो आप अश्विनी जिंदल साहब को एक बार, सर अश्विनी जिंदल साहब से बात कर लेना, तो अपन टीम व्यूअर पे लेके आई विल ओके ठीक। चेक योर, है ना, क्योंकि मैंने किया हुआ हो जाएगा फाइल में। सर ठीक। मेरा उसमें एक क्वेश्चन है। हाँ उसमें जी गलती अनुराग से जी। क्लिक कर देते हैं ना, क्लिक करने के कारण से वो इंफॉर्मेशन मांगता है, तो कैंसिल करके बैक जाना होगा। वापस से आप उसको भरेंगे ना फॉर्म को, तो नहीं मांगेगा वो डिटेल। सर मेरी ना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसमें 3.5 करोड़ की एजुकेशनल रिसीट्स हैं। हाँ दो हाँ, करोड़ की उसने लैंड सेल कर दी और उसके अगेंस्ट 2.25 करोड़ की नई लैंड परचेज कर ली। तो लैंड सेल कर दिया तो 5 करोड़ से ऊपर हो गया वो। तो सर इसमें जो हम फॉर्म 10B फाइल करेंगे, उसमें क्लॉज 28 में डालेंगे इसको, या क्लॉज 36 में डालेंगे लैंड सेल को? लैंड सेल तो एक्चुअली लैंड सेल इज नॉट योर बिजनेस रिसिप्ट, है ना, या मतलब आपकी 11(1) जो आपकी नॉर्मल रिसिप्ट नहीं है, है ना, तो हाँ वो जी। एक मिनट में वो सर 10। 11(1) A में कैपिटल गेन विल बी एडेड इन P&L को। हाँ पर सर नहीं, इसमें पर कैसा सर, कैपिटल मैं गेन जो तो ऐड होगा, पर जो टोटल सेल प्रोसीड्स है ना, उसको भी आपको कंसिडर करना होगा। कैपिटल ओनली गेन की फिर। कैपिटल गेन होगा, बट टोटल सेल प्रोसीड इज योर इनकम फर्स्ट ऑफ ऑल। सर फिर इसमें ना उसमें से आपने मैं जो इसमें उसमें विजुलाइज कर रहा हूँ ना, जैसे हम हाँ, 28 में डालेंगे 3.5 करोड़ रुपया, 36 नंबर कॉलम में जो एक क्या मिनट वो सर, है ना, एक वन मिनट, वन 28 नंबर ये रहा आपका। इनकम अदर देन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, और इनकम ऑफ फंड और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, तो अदर देन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो भी आपकी अदर इनकम है ना। यहाँ पे 3.5 करोड़ डालेंगे सर हम। अनुराग जी इनकम नेट फिगर डालनी है। ये 5.5 करोड़ का 3.5 करोड़। नहीं, ये नेट फिगर जो कैपिटल गेन हुआ और जो परचेज कर लिया उसको निकाल के जो बैलेंस रह गया वो डाल। 11(1) A को पढ़ के जो कैपिटल गेन की फिगर आएगी वो डालनी। नहीं, कैपिटल गेन तो आ ही नहीं रहा ना, 2 करोड़ की सेल की है, 2.25 करोड़ की परचेज की है। जो परचेज कर ली इसका मतलब आपका कैपिटल गेन कोई नहीं बना, आपकी जीरो फिगर आएगी। सेल ऑफ एसेट एंड देन यू हैव परचेज अनदर एसेट, देन हाँ, नथिंग इज कैपिटल टू बी गेन कुछ भी रिकॉर्ड। नहीं होगा, अगर आपने एसेट परचेज करके सेल कर लिया, सो देर इज नो कैपिटल गेन।
अगर कुछ जो डिफरेंस है भी सही, मान लिया 2.25 करोड़ में बेचा और 2 करोड़ में खरीदा, तो 25 लाख रुपए आपका प्रॉफिट है। यस सर। बट इन माय ओपिनियन ऑन ए सेफर साइड आपको उसको 2.25 करोड़ को ग्रॉस रिसीव मानना चाहिए और 10B फाइल करना चाहिए। 10B सर वही है ना, अगर सेफर 10B साइड। में 3.5 करोड़ लिखूंगा तो उसने सीपीसी ने प्रोसेसिंग में कह देना कि आपने 10B भी फाइल करना था, तो वहां पे प्रोसेसिंग में दिक्कत आएगी। ये देखिए, जो ये आपका जो 10B का 36 है ना, डिटेल्स ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड, इसके हाँ जी। अंदर आएगा आपका वेयर कैपिटल, वेदर कैपिटल एसेट बीइंग प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, जो आपका सेल प्रोसीड ऑफ एसेट है वो यहाँ पर आएगा 11(1)(a) में, 36 में। सर इसमें मैं जो विजुअलाइज कर रहा हूँ, इसमें ये कल को सीपीसी प्रोसेस करेगी, वहां पे नहीं कहेगी कि आपको 10B भी फाइल करना था, क्योंकि यहाँ पे साढ़े नहीं तीन नहीं 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 नहीं, आप 10B कर रहे हैं, सीपीसी क्यों बोलेंगे? नहीं नहीं बोलेंगे, क्योंकि दिस इज ऑल्सो योर ग्रॉस रिसिप्ट। देखिए 11(1)(a) का जो डिडक्शन है ना, वैसे भी दैट इज ओनली आर्टिफिशियल, दैट इज आर्टिफिशियल। नया इनकम टैक्स बिल जो आने वाला, उसमें ये 11(1)(a) कंसेप्ट ही उन्होंने हटा दिया, क्योंकि होल रिसिप्ट इज ट्रीटेड एज योर ग्रॉस रिसिप्ट। और अभी भी आपका पहले तो ग्रॉस रिसिप्ट ही होगा, उसके बाद उसमें से अगर कुछ आपने यूज किया तो वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा। तो सर अनुराग जी जल्दी कंप्लीट कीजिए, फिर बाकी क्वेश्चन ले लें, क्योंकि वो रिलेटेड तो हमने रजिस्ट्रेशन लेने हैं मेनली, क्योंकि 10B के बाद में लेंगे। अब हमने पहले रजिस्ट्रेशन के ले लें सर। अगर कोई रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चन है, काइंडली वो अपने हैंड रेज करें, अभी अदर टॉपिक पे ना करें, क्योंकि आज का हमारा स्पेसिफिक टॉपिक था। मैं फॉर द टाइम बिंग सभी हैंड लोअर कर दिए हैं, तो काइंडली वो रजिस्ट्रेशन रिलेटेड पहले पूछें। हाँ जी, आपके दीपक बांसल जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार रसोई जी। हाँ जी। दीपक जी बोलिए। अच्छा राजेश जी, अच्छा है आपका, काफी अच्छा आपने बोला है और बताया है। मैंने कुछ एक एक करके पूछता हूँ। एक मिनट, आपके पास कोई 2 मोबाइल एक साथ चल रहे हैं, इसलिए आवाज इको हो इको रही आ है। रही है जी आपकी काफी ज्यादा। हाँ जी, मैंने बंद कर दी, मोबाइल नहीं रखा। ठीक है आवाज? नहीं हाँ सर नहीं, अभी भी इतनी ठीक बोलिए। नहीं है। चलो बताइए, क्वेश्चन बताइए सर। 1023(4) एप्लीकेशन क्या वो खत्म हो गई है? 1023 अब जो अप्रूवल मिलेगी वो हमें 1023(4) के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अब हमें सेक्शन 12A में जाएंगे क्या? वो 12A में के थ्रू होगा। जो भी आपका 1023C का एग्जेम्पशन, 1023C के सारे प्रोविजन एज इट इज हैं, केवल उसका रजिस्ट्रेशन जो होगा फॉर्म 10AB में, और एज पर सेक्शन 12A सबसेक्शन 1 क्लॉज AC के अंतर्गत होगा। नहीं वो तो मैं समझ गया, पर क्या इसका मतलब है कि जो हमें मिलेगा वहां पर वो 1023(4) के रूल्स एप्लीकेबल होंगे या 12A के रूल एप्लीकेबल नहीं, होंगे? 1023C के सारे रूल होंगे, केवल रजिस्ट्रेशन उन्होंने 12A में शिफ्ट किया है। बाकी अच्छा प्रोविजन जो एग्जेम्पशन वगैरह सारे टैक्स प्रोविजन जो भी है 1023C के ही लागू होंगे। अच्छा, इसका मतलब है 12A और 1023(4) एग्जिस्ट करेंगे, तो दोनों को दोनों एग्जिस्ट एग्जिस्ट, करेंगे। यस यस यस, दोनों एग्जिस्ट करेंगे, यस। अच्छा अच्छा सर, थैंक्स अ लॉट। दूसरा ये क्वेश्चन है कि ये जो हम पढ़ते हैं मैक्स टैक्स, कोई भी ट्रस्ट जिसकी इनकम यदि टैक्सेबल हो। एक मिनट, आपकी आवाज थोड़ी कम आ आपकी रही है आवाज सर, नहीं आ आवाज रही कम सर, आ रही है दोबारा और करें। इको भी हो रही है, आवाज इको हो रही है और कम आ रही है। हाँ सर, अगला क्वेश्चन लेते हैं सर उनका, वरिंदर भाटिया जी। हाँ जी पूछिए, वरिंदर भाटिया जी। वरिंदर भाटिया जी, देन अनिल जी। हेलो। हाँ जी अनिल जी। हाँ वरिंदर भाटिया हेलो। जी पूछिए। हाँ जी। मेरा सर ये क्वेश्चन है कि जैसे मेरी पहले रजिस्ट्रेशन हुई हुई है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, पर हाँ वो 5 करोड़ से नीचे का हो चुका है, तो मैं 1020C AAA ले लूं, तो मुझे हाँ, रजिस्ट्रेशन दोबारा रिन्यूअल करानी है या नहीं करानी है? कोई जरूरत नहीं फिर आपको रिन्यूअल कराने की। अगर आपकी 5 करोड़ से कम की रिसिप्ट है और आपका ओनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो फिर हाँ, आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मुझे 115BD की रिक्वायरमेंट तो नहीं हो जाएगी कि मैंने रजिस्ट्रेशन की रिन्यूअल नहीं कराई? नहीं, 115 TD लागू नहीं होगा, बिकॉज ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ अदर सेक्शन है ना। अगर आपका जी। ओनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड। तो जब मेरी 5 करोड़ से अबाव चली जाएगी तो मुझे दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा या फिर वही पुराना? अगर आपका पुराना 5 इयर्स एक्सपायर नहीं हुआ तो वही चलता रहेगा। नहीं, एक्सपायर तो हो जाएगा, मेरा इस हो साल जाएगा तो एक्सपायर फिर हो फ्रेश गया। अप्लाई करना पड़ेगा, आपको फ्रेश अप्लाई करना क्योंकि पड़ेगा। मेरा इस साल ये रिक्वायरमेंट है कि मेरा ये 5 ईयर कंप्लीट हो गए हैं इस साल। तो मैं हाँ तो सोच फिर रहा आप। था रिन्यूअल कराऊं या ना कराऊं, क्योंकि मेरी सारी रिसीट 5 करोड़ से नीचे ही है। हम्म, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि रिन्यूअल अगर करवा लूं तो तब मुझे 12 मिल जाएगा? मिलेगा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। 1020, तो क्योंकि 1023 CD वो दैट इज ऑल्सो ओवरराइड।
हाँ जी स्निग्धा जी। हेलो। मेरे को- हाँ हाँ नमस्ते जी। सर। हाँ जी अनिल जी। हाँ जी। हाँ सर। सर एक ट्वेल्व रजिस्ट्रेशन था A1 for 2021 से पहले। फिर उसके बाद सीपीसी ने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया, लेकिन कोड उसमें जो है ना 1AC6 दिया। और जब हमने अब नया उसको परमानेंट के लिए जो 10AB डाला, तो उसमें कोड जो है ना जो सीपीसी ने दिया था 12A1AC6 दिया था, उसी को ही लिया। लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया, बोला कि आपका कोड गलत है, आपका कोड होना चाहिए 121AC1। लेकिन जब अब मैं फॉर्म फाइल कर रहा हूँ 10A में, तो वो कोड है ही नहीं सर। एक मिनट, आप वापस से बताइए आपका क्वेरी। सर मेरा 12A रजिस्ट्रेशन था 1 for 21 से पहले का। ठीक है, ठीक है। अब उसमें हमने सीपीसी ने उसको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया, तो आपने सीपीसी। अप्लाई किया, आपने हाँ। प्रोविजनल अप्लाई किया, हाँ। तो आपने गलत अप्लाई कर दिया ना, आपको प्रोविजनल अप्लाई नहीं करना चाहिए था। हाँ वो गलत अप्लाई हो गया वो आपको वो तो गवर्नमेंट ने बार बार डेट एक्सटेंड की थी ना, कि जिन लोगों ने गलती से प्रोविजनल अप्लाई कर दिया है 30 हाँ जून 2024 तक एक्सटेंड किया था, कि जिन्होंने गलती से अप्लाई कर दिया वो नया अप्लाई अपना रेगुलर में कर सकते हैं। करेक्ट सर। तो लेकिन अब आपने वो नहीं किया, तो अब आपको है ना, अभी इन माय ओपिनियन आपको जो 6 का कैपिटल बी है उसमें हाँ। अप्लाई करना चाहिए। उस हाँ। आपने उसमें पिछले वर्षों में सेक्शन 11-12 का एग्जेम्पशन लिया हुआ है क्या? हाँ जी सर। अच्छा। और अभी हाँ। आपको जो यूटिलिटी में अब आप देख रहे होंगे, तो आपको वो 12AC रोमन 2 वाला ऑप्शन नजर आ रहा है क्या? नहीं, नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है? तो फिर तो नहीं। आपको सर ओनली आपको पास आईटीएटी अपील में जाने के सिवा अभी कोई रास्ता नहीं है। तो 2 बार रजिस्ट्रेशन, अब आईटीआईटी आप अपील में आईटीएटी गए। में अपील में जाके फिर ही आपको वहीं से वो इंस्ट्रक्शन देंगे कि पिछले 5 साल का रजिस्ट्रेशन आपको ग्रांट किया जाए। दैट इज ओनली ओके सर। बेस्ट वे। जी सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ जी नेक्स्ट स्निग्धा जी आपका क्वेश्चन है कोई? आपका हैंड रेज था स्निग्धा सरना जी। हाँ Good जी evening, स्निग्धा। everyone. Yes, sir, I have a question. I हाँ think वो जी। similar ही है with the previous one. Sir, an educational society has come to us. उसकी 2 साल से exemption deny हुई है. When we checked, it was because it was granted provisional registration under section 1023C4 instead of 1023C6. तो ये सेक्शन कोड गलत सिलेक्ट हुआ होगा व्हेन दे हैड अप्लाइड फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। तो सर अब आई वुड लाइक टू नो व्हाट शुड बी द करेक्टिव एक्शन। देखिए, करेक्शन अब क्या होता है जनरली, सी अगर आपने कोई रॉन्ग अप्लाई किया है तो देट कैन ओनली बी रेक्टिफाइड। आइदर सीआईटी एग्जेम्पशन को आप एप्लीकेशन लगा के रेक्टिफाई कर सकते हैं। इफ दे डू नॉट रेक्टिफाइड, ओनली वे लेफ्ट इज द आईटीएटी अपील, क्योंकि दे विल गिव द इंस्ट्रक्शन, अदरवाइज सीआईटी विल नॉट डू। अदरवाइज सर जैसे अब नाउ दे आर ड्यू फॉर रिन्यूअल, तो इफ वी अप्लाई अंडर करेक्ट सेक्शन दिस टाइम तो विल दैट हेल्प? अगर आप अभी करेक्ट में अप्लाई करेंगे, पर जो पुराना रॉन्ग है वो तो नहीं सुधरेगा ना, वो गलती नहीं सुधर पाएगी आपकी। ओके, इसके लिए हमें सीआईटी एग्जामिशन में या आईटीएटी वो तो अपील में ट्रिब्यूनल जाना? अपील के थ्रू सुधर सकते। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सर। नेक्स्ट आकाश जिंदल जी। सॉरी कंबोज साहब आपको अभी वेट हेलो। करना पड़ेगा, पहले मेंबरों के क्वेश्चन ले लें। आकाश जिंदल जी। पर साडा यस, हाथ क्या गुड सी जी इवनिंग इस सर। करके हैंड रेज ही रखा। मेहता साहब, मेरा क्वेश्चन है कि अभी भी काफी रिलीजियस ट्रस्ट हैं और रिसेंटली मेरे पास एक आए हैं, तो वो तकरीबन 10-15 साल से ऑलरेडी वो रिलीजियस प्लेस चल रहा है, लेकिन कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है एक्सेप्ट कि वो जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हुई है। तो अब अगर उसको अप्लाई करते हैं तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फॉर द अर्लियर ईयर्स? ये देखिए, अब पिछले किसी भी ईयर में उन्होंने अपना आईटी रिटर्न भी फाइल नहीं कराया क्या? नो, नो, नो। नहीं No किया, IT अच्छा। return, no books of account, no accounts audited, ठीक है, and तो I कोई बात presume that their नहीं। receipts are more than they are having interest on FDRs also, taxes deducted there on 10%, and तो it is going to only when the new management took उनको over. सर,
उन्हें सर क्या है कि उनको सेक्शन 1023 वो जो 12A 1AC का जो क्लॉज 6 है, क्लॉज 6 के कैपिटल बी में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जी उसमें लिखा है एक्टिविटीज हैव बीन कमेंस्ड एंड यस विथ कंडोनेशन। तो विथ कंडोनेशन अप्लाई करेंगे तो पुराने ईयर्स का रजिस्ट्रेशन उनको मिल सकता है। तो फॉर ऑल पुराने द ईयर से अर्लियर फिर जो ईयर्स, भी, बट हाँ फॉर उसके कोई अर्लियर ईयर। अकाउंट्स नहीं है हमारे पास, कोई अवेलेबल नहीं है, तो इसमें वो पुराने कितने साल के, 3 साल अकाउंट्स के भी ही सर देखिए मांगेंगे? वैसे भी जरूरी है सर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो पिछले 5-6 साल का केस तो रीओपन कर सकता है, और हाँ, एटलीस्ट मिनिमम 3 इयर्स का केस वो रीओपन कर सकते हैं। मिनिमम 3 इयर्स का केस दे कैन रीओपन अंडर सेक्शन 148। तो दैट शुड बी अप्लाइड विद कंडोनेशन ऑफ डिले। हाँ, कंडोनेशन ऑफ डिले में अप्लाई कर दीजिए। और अकाउंट्स वगैरह तो देखिए वैसे भी लोकल जो लॉ होते हैं, जो आपका रजिस्ट्रार हो पब्लिक ट्रस्ट या लोकल में आपने जो जो भी रजिस्ट्रेशन लिया वहां के अनुसार भी दे आर कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्योंकि ट्रस्ट की जो मनी है वो जनता की मनी, तो जनता को तो हिसाब करेक्ट बताना ही करेक्ट, पड़ेगा, इनकम टैक्स को दैट्स बताएं वेरी या नहीं बताएं। ठीक है सर, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। यस। हाँ जी आकाश जिंदल जी। गुड इवनिंग सर। यस बोलिए। ये सर एक सोसाइटी है जो कि 1023C ट्रिपल ID में अपने स्कूल चला रही है, और उसकी रिसिप्ट्स कम है 5 CR से, वो अपनी रिटर्न फाइल कर रही है। अब करंटली उसकी एक्सपेक्टेशन है कि 5 करोड़ से एक्सीड हो जाएगी। तो फिर हम इसका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट परमानेंट? डायरेक्ट परमानेंट होगा। डायरेक्ट परमानेंट होगा उसका, उसमें क्लॉज 6 कैपिटल बी में। ओके, ओके, थैंक यू सर। हाँ जी सर। नेक्स्ट। हाँ जी वेंकट जी, हाँ जी आपका क्वेश्चन है सर। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। सर हमारा एक कंपनी, हमारा एक ट्रस्ट कंपनी में कन्वर्ट हुआ है, यस एंड उसके लिए दिस इज गवर्न बाय महाराष्ट्र पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट। यस तो हमने चैरिटी, वी आर गवर्न बाय चैरिटी कमिश्नर। यस। तो हमने चैरिटी कमिश्नर से कोई एनओसी नहीं लिया है, लेकिन वी फाइल्ड एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ द ट्रस्ट इनटू अ कंपनी, वी फाइल्ड अ लेटर विद देम रिक्वेस्टिंग फॉर देयर एक्सेप्टेंस, but the department is very slow, so they have not processed this as yet. In the meanwhile हमने provisional registration ले लिया। Within 6 months हमने री रजिस्ट्रेशन के लिए और अप्रूवल के लिए हमने फाइल कर दिया है। बिकॉज ऑफ द चैरिटी कमिश्नर्स लेटर बीइंग एब्सेंट, दैट इज एनओसी नहीं है, इसलिए उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। रेन्यूअल उन्होंने 5 साल का जो करना है उनको, उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। तो व्हाट इज द सिचुएशन नाउ? आई थिंक दे कैन नॉट रिजेक्ट। अभी जो नया एक सेक्शन मैंने डिस्कस किया था, सेक्शन 12 कैपिटल ए कैपिटल सी, तो मर्जर ऑफ एनी ऑफ द ट्रस्ट इन एनी अदर ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट। तो So this अगर is, आपका ट्रस्ट उसमें मर्ज हो रहा है तो 12 कैपिटल ए सी की कंडीशंस अगर आपकी फुलफिल हो रही है तो देन ऑल्सो यू कैन क्लेम द एग्जेम्पशन। so is conversion and merger the same? Merger is two different entities, but conversion is a single entity in a different legal status. Are they But the same, sir? conversion can also be treated as a merger if you have already, because both are now different entities. Both are earlier charity, your institution is now no more, so new has been come into existence. So earlier has been merged into the new. So you have transferred all your assets to the new. So it will be covered under 12 capital AC. But if the department has rejected, you have only left option to go to the ITAT. So they नेक्स्ट will क्वेश्चन सर consider, ले लें। because if you have intimated to the charity commissioner, so I think there is no such major violation. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें सर पीयूष मनचंदा जी का। हाँ जी पीयूष जी, देन मनीष हेलो गुप्ता जी। हाँ जी हेलो, फर्स्ट गुड इवनिंग पीयूष जी। सर। हाँ जी Yes, बोलिए पीयूष जी। सर एक ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जिसका 1 अप्रैल 2021 से पहले 12A था उसके पास, लेकिन उसने उसको रेगुलराइज ना करके प्रोविजनल ले लिया, और फिर उसके बाद उसने 1023C ट्रिपल AD में, क्योंकि 5 करोड़ से लेस थी रिसीट्स, तो 2 इयर्स की जो रिटर्न गई वो इस क्लोज में गई, और अब 25-26 में उनकी 5 CR से एक्सीड है, तो इसको हम रजिस्ट्रेशन किस क्लोज में लें?
अब आपको 6 कैपिटल बी में जाना होगा सर, है ना, 6 कैपिटल बी में, पर आप 6 कैपिटल बी में, क्योंकि आपने सेक्शन 11-12 का कोई एग्जेम्पशन नहीं लिया, और नहीं लिया सर, 1023C 4, 5, 6 में भी कोई एग्जेम्पशन नहीं लिया, तो नहीं लिया कैपिटल सर। सी, सो 12A1AC क्लॉज 6 कैपिटल बी, सो दिस इज ओनली द ऑप्शन। और सर वो 10 ईयर्स के लिए होगा, 5 ईयर्स के लिए? वो कंडोनेशन ऑफ डिले के साथ 5 ईयर के लिए मिलेगा, क्योंकि उसमें आपको पहले से रजिस्टर्ड होते तो क्लॉज 2 में जाना पड़ता, वहां 10 ईयर मिलता। 6 ठीक कैपिटल है बी सर, में जो भी मिलेगा वो 5 ईयर का मिलेगा। ठीक है सर। और जो सर जैसे ट्रस्ट डीड में हमने कोई क्लोज ऐड करना है, तो ये रिजोल्यूशंस के थ्रू हम ऐड कर सकते हैं, यस, जैसे यू कुछ कैन डू क्लोज रह गए हो? रिजोल्यूशन पास करके, ऑब्जेक्ट से चेंज नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट्स हाँ का जी। मतलब होता है कि आपने रिलीजियस के लिए कोई ट्रस्ट बनाया था, और उसने चैरिटेबल पहले नहीं था किंतु चैरिटेबल चालू कर दिया, तो ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। या आपने कोई चैरिटेबल के लिए इंस्टीट्यूशन बनाया था, ओनली चैरिटेबल, बट बाद में आपने रिलीजियस ऐड कर दिया, सो देट इज कॉल्ड द चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। बट सर अगर आपने, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं है? हाँ, मेन ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा, देन इट इज नॉट कॉल्ड द चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे इरिवोकेबिलिटी क्लोज वो मेंशन करना रह गया था ट्रस्ट डीड में, तो उसको रिजोल्यूशन के थ्रू हम वो कर हाँ, दें। तो वो तो देते हैं, वो देट यू कैन डू, देट इज नॉट मेजर चेंज। ओके ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट जी, हाँ जी, मनीष गुप्ता जी। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सर एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसका 5 ईयर्स का रजिस्ट्रेशन मिला था, जो कि एक्सपायर हो रहा है असेसमेंट ईयर 26-27 में। ठीक है। तो आज की डेट में जब हम अप्लाई करते हैं री रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि अभी ऑडिट असेसमेंट ईयर 25-26 का ऑडिट कंप्लीट नहीं हुआ, तो जो लास्ट 3 ईयर्स के फाइनेंशियल्स लगाने हैं उसमें ये 24-25 के कंपलसरीली लगाने पड़ेंगे क्या हमको? कंपलसरी सर, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का कंपलसरी नहीं लगाएंगे तो पहली बार आपको 5 ईयर का ही मिलेगा, 10 ईयर का नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ओके ओके। ओ मेहता जी, अगर मैं भी एक 5 करोड़ क्वेश्चन से पूछ कम रहा है हूँ। तो। अगर जैसे हमने 30 तक फाइनल करना है, तो आपका एक क्वेश्चन था उसमें कि वेदर यू हैव फाइल द रिटर्न फॉर द प्रीवियस ईयर, तो अभी तो रिटर्न फाइल की नहीं हमने 25 की। पिछले सर रिटर्न तो, रिटर्न के लिए तो उन्होंने लिखा है कि जिसकी ड्यू डेट एक्सपायर हो गई वो आईटीआर की डिटेल चाहिए, ठीक तो है। ड्यू तो डेट अब, एक्सपायर ऑफ द 24 AY 24-25। और इवन दो फॉर विदाउट फाइनलाइजिंग द बैलेंस शीट फॉर 25 वी कैन अप्लाई। हाँ, यस, बिना आपका ऑडिट रिपोर्ट नहीं मांगा, दे हैव कॉल्ड फॉर ओनली द फिगर। ओके उन्होंने ओके, ऑडिट रिपोर्ट नहीं मांगा, इंफॉर्मेशन मांगा है कि उस ईयर की ग्रॉस रिसीप्ट कितनी है, एसेट्स लाइबिलिटीज क्या है। 25 की देनी पड़ेगी ग्रोस। देनी पड़ेगी। देना पड़ेगी कंपलसरी। ठीक है सर, ठीक ठीक है है। सर, थैंक यू तो सर। इसका मतलब बेटर है कि बैलेंस शीट फाइनल करने के बाद ही करें उसका। हम्म। सर एक क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन है, एक्चुअली हाँ मेरी जी आवाज दीपक सुन जी। रही है तो हाँ, ये सर ये मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टैक्स क्या होता है ट्रस्ट में, जहां पर हमें ऑडिट कराना ग्रॉस होता है? रिसिप्ट, ग्रॉस रिसिप्ट मतलब बेसिक एग्जेम्पशन, जो इनकम टैक्स की लिमिट है 3 लाख, तो वो 2.5 लाख मानी जाएगी, 3 लाख मानी जाएगी, जो और पिछले रहेगी साल या के नहीं लिए रहेगी? 3 लाख की लिमिट। अच्छा, ओके, थैंक यू। हाँ जी, मेरे ख्याल में सबके क्वेश्चन हो गए हैं। अनुराग जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। जो नहीं, मनीष गुप्ता जी, आपका हो गया क्वेश्चन? सर हाँ एक जी, क्वेश्चन हो रहा है, सर एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा। हाँ जल्दी जो पूछिए जो सर। हाँ हम जी, वो चैरिटेबल ट्रस्ट की जिसकी 5 करोड़ से नीचे की रिसीट है फॉर लास्ट 2 ईयर्स, उसको 10 साल का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो जो 5 करोड़ की जो रिसीट्स की बात कर रहे हैं उसमें आवाज कॉर्पस। नहीं आ रही, आवाज कट हो। हेलो सर, आ रही है आवाज? हेलो मेरे ख्याल में मेहता जी के एंड पे कोई दिक्कत आ रही है शायद। सर मेहता जी, आपके एंड पे दिक्कत है। हाँ हेलो हाँ हाँ, अब सर, ठीक आ है रही है सर। हाँ आवाज? आवाज आ रही है अब? हाँ, बोलिए बोलिए सर बोलिए, हाँ जैसे बोलिए, हाँ। जैसे जो ट्रस्ट का 5 करोड़ से नीचे का रिसीट्स है लास्ट 2 ईयर्स का, उसको 10 साल का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, करेक्ट? तो जो पांच हाँ साल हाँ की हाँ, 5 करोड़ की रिसीट्स के अंदर कॉर्पस भी ऐड होगा क्या? मतलब कॉर्पस को भी देखा जाएगा क्या यस 5 साल? यस यस, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऑल ऑल विदाउट गिविंग इफेक्ट ऑफ सेक्शन 11 एंड 11। 12, तो ठीक है ग्रॉस सर, रिसिप्ट इंक्लूडिंग कॉर्पस। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी सर, अपना मेरे ख्याल में नेक्स्ट क्वेश्चन अनुराग जी और एक नरेश कुमार जी वन का क्वेश्चन है। हाँ जी, नरेश जी। सर, मैं एक जैसे एक स्कूल में हम बसेस वगैरह चलाते हैं और स्टूडेंट से इनकम, बस का फेयर लेते हैं, वो बिजनेस, सेपरेट बिजनेस इनकम तो नहीं गिनी जाएगी ना? नहीं नहीं नहीं, वो तो वैसी एक्टिविटी उसमें भी इंक्लूडेड है। क्यों मेहता सर? नहीं, दैट स्कूल इज के लिए नॉट बसेस की बिजनेस, तो दैट इज नॉट बिजनेस। इट इज नॉट ए बिजनेस। इट इज नॉट ए बिजनेस, वो तो यस ग्रॉस रिसीट्स में ही आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। यस यस यस। हाँ जी, हेलो गुड। देन जावेद जी, सर, सॉरी नरेश जी। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर।
हाँ जी। सर एक नया ट्रस्ट बनाया है, हाँ जी। तो सर उसकी परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कौन से सेक्शन में फॉलो करना पड़ेगा? चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए सर, गौशाला पहले तो जैसे एक्टिविटीज प्रोविजनल आपकी लेनी स्टार्ट पड़ेगी, हो गई है परमानेंट क्या? तो बाद में है। नहीं, एक्टिविटीज कमेंस हो चुकी हैं, बैंक कमेंस अकाउंट हो भी गई है ओपन तो हो चुका क्लॉज है, 6 डोनेशन भी आ कैपिटल रही बी है। में जाना पड़ेगा, क्लॉज हाँ 6 जी, कैपिटल बी। क्लोज 6 कैपिटल बी में ही जाना पड़ेगा। 12A 1AC क्लॉज 6 रोमन 6 कैपिटल बी, रोमन ओके 6 कैपिटल बी, एक्टिविटीज चालू हो गई तो। ओके। और एक सर, एक चीज और पूछनी है सर, आपने जो फार्म में बताया था ना भी बैलेंस शीट्स की जो डाटा डालना है रिन्यूअल के लिए, आपने वहां पे बोला था भी एज हाँ ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन फिगर्स मेंशन करनी है जो हाँ, आपने यस यस, आज का वो, तो फिर मतलब प्रोविजनल बैलेंस शीट तैयार लिखा है करेंगे सर? फॉर्म के मान अंदर, लो लिखा आज हुआ हम है फार्म जो फाइल कर रहे हैं नोटिफाइड फॉर्म 13। है उसमें लिखा है कि एज ऑन डेट ऑफ। हाँ जी, हाँ, सॉरी सर समझा नहीं मैं। तो आज का 2-4 दिन पहले का लेके रख लीजिए, बस ज्यादा 2-3 दिन पहले का, क्योंकि उसमें तो लिखा है एज ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है सर। तो नहीं सर, फिर वो तो ऊपर आज की तारीख वो में पूछ आपकी रहा है क्या भी, रिसिप्ट है? आपने जैसे 31 मार्च 24 की वो पूछ रहा है भी बैलेंस शीट आपने रिटर्न फाइल कर दी है, तो नीचे पूछ रहा है एज ऑन आज की डेट जो हम फाइल अप्लाई एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं। रिटर्न आईटीआर उन्होंने पूछा, आईटीआर पूछा है, आईटीआर पूछा है कि पिछले साल का ड्यू डेट जिसका एक्सपायर हो गया वो फाइल हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है पर सर, ओके। एसेट लाइबिलिटीज एज ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो मतलब प्रोविजनल बैलेंस शीट ड्राफ्ट करें हम एज ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन। यस 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 यस, एंड और एक सर ड्यूली और साइंड क्वेरी बाय है द मेरी, ट्रस्टीज। सर एक क्वेरी और है सर, एक ना ये पॉइंट है 10 AB में 14 नंबर पॉइंट, डिटेल्स ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। यस, जैसे सर अब मान लो किसी ने एनओसी दी हुई है चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए, ओल्ड एज होम चल रहा है, ठीक है, तो वो एनओसी अटैच करनी वहां पे मैंडेटरी है या नहीं है सर? मतलब उन्होंने ना तो अक्वायर्ड है वो जगह, ना गिफ्टेड है, ओनली फॉर एनओसी चैरिटेबल की कोई पर्पस। जरूरत नहीं है, एनओसी की कोई जरूरत नहीं है। तो वो वहां पे कोई डिटेल ना मेंशन करें भी हमारा मतलब जो ओल्ड एज होम चल रहा है तो वो कहाँ पे चल रहा है, किस चीज पे वो चल रहा है? अगर ना आपकी गिफ्टेड प्रॉपर्टी ना एक्वायर्ड है तो आपको जरूरत नहीं वहां लैंड बिल्डिंग लिखने की। नहीं सर, बैलेंस शीट में तो है ही नहीं लैंड, बैलेंस शीट में बैलेंस एसेट्स शीट में नहीं है कोई तो आपका वहां पे जो लैंड और बिल्डिंग एक्वायर्ड या गिफ्टेड, बस वही वाला मेंशन करना। ओके, एनओसी के केस में हम कुछ नहीं करेंगे भी उन्होंने यूज करने के लिए दी हुई है। हाँ, वो तो जब अगर ड्यूरिंग आपका अगर हियरिंग के दौरान अगर सीआईटी एग्जेम्पशन कुछ डिटेल मांगता है एनओसी दीजिए, देन यू हम्म। मे बी रिक्वायर्ड, सर बिकॉज ही मे ऐसे ना जैसे रिक्वायर्ड। बिल्डिंग में रिपेयर रेनोवेशन तो होती रहती है, वो तो हम एक्सपेंसेस क्लेम कर ही रहे हैं। वो कर सकते हैं, वो दैट इज नॉट योर एक्वायर और एसेट, दैट इज नॉट योर ओके। एसेट। हाँ जी, सर मेरे ख्याल में अभी क्वेश्चन एक है, वो जावेद जी आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, देन वी विल कंक्लूड विद द क्वेश्चन, क्योंकि बाकी मेहता जी अगर आप अलाउ करो तो अदरवाइज मेरे ख्याल में लास्ट क्वेश्चन ही ले लें क्योंकि काफी टाइम हो गया। ठीक है। गुड इवनिंग सर। हाँ जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि एक स्कूल है, एजुकेशनल ट्रस्ट है, जिसकी पहले रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए ली गई थी, पर वो अब उसका रिन्यूअल आ रहा है क्योंकि 30 सितंबर की डेट है। हाँ तो हम उसको रिन्यू ही कराएं 12A में, या हम वैसे उसमें एग्जामेशन क्लेम करें? सर देखिए, वैसे मेरी ओपिनियन में अगर 1023C के अंदर आप जा सकते हैं, जी, रोमन 3 AD रोमन के अंदर आप 3 AD। जा सकते हैं, तो फिर उसमें आई थिंक जरूरत नहीं है, आपका केवल एजुकेशनल एक्टिविटी है, ग्रॉस रिसीप्ट 5 करोड़ से कम है। 5 करोड़ से ऑलवेज नीचे है, हाँ, तो उसमें 1023C में जाए। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा है, अभी हमारे पास एक केस आया है जिसमें एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल अप्लाई हुई थी तो उनको ग्रांट भी हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने फाइनल के लिए अप्लाई नहीं किया। जब फाइनल के लिए अप्लाई किया तो टाइम ड्यू डेट चली गई थी एप्लीकेशन की, क्योंकि कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज हो गई थी। हाँ, हाँ। तो फिर जब उनको कम्युनिकेशन हुई थी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, तो जो ट्रस्टी थे, ऑफिस बियरर थे, वो थे नहीं। मैंने तो उनकी जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है अब वो कैंसिल हो चुकी है। तो सर इस केस में क्या करें? ट्रस्ट की जो ग्रॉस रिसिप्ट है लेस देन 10 लाख रुपीज है ऑन एन एनुअल बेसिस। ट्रस्ट की प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कैंसिल कराई क्या? जी जी, उन्होंने कुछ क्वेश्चन मांगा था जब उन्होंने फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई और किया था, तो पहले भी कभी आपने 12A रजिस्ट्रेशन करवाया था क्या, 1/4/21 के पहले या उसके पहले? नहीं नहीं नहीं, उससे पहले कभी नहीं कराया प्रोविजनल सर। पहली बार ही किया है ना आपने? जी जी, प्रोविजनल आपने प्रोविजनल, पहली बार ही किया है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा,
तो आपका आई थिंक अगर टैक्स लगेगा भी तो एज पर सेक्शन 164 आपको एज एन एओपी के रेट से टैक्स लगेगा। तो जी 164 सब सेक्शन 2 के अंदर एओपी के जो नॉर्मल इंडिविजुअल के स्लेब रेट होते हैं उस रेट से जी आपको इनकम टैक्स लग सकता है बस। जी। तो अभी अगर हमें 12A या 80G दोबारा से लेनी होगी उसके लिए क्या प्रोसेस है? मतलब हम फाइनल के लिए अप्लाई आप करेंगे? रोमन 6 कैपिटल बी में अप्लाई कीजिए बस, विद कंडोनेशन ऑफ डिले लगा दीजिए उसके अंदर। फाइनल में या प्रोविजनल में? फाइनल होगा, वो फाइनल होगा, प्रोविजनल नहीं होगा। आपकी सर एक्टिविटीज अगर चालू हो गई हैं, एक्टिविटी चालू हो गई तो रोमन बिल्कुल 6 सर, एक्टिविटी कैपिटल बी। रोमन सी कैपिटल बी। हम्म। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी सर, हो गया सर, मेरे ख्याल में कंक्लूड करें सर। ठीक है। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। Yes. आप मैं आई विल रिक्वेस्ट अमरजीत कंबोज जी, हमारे मतलब आपने पूरे ध्यान से इसको सुना भी है, समझा भी है, और सुभाष जैन जी, और मेरे ख्याल में ये आज का सबसे बेस्ट टॉपिक था, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। जैसे मेहता जी ने बड़ी चीजें मैंने भी नोट की हैं, जैसे वो 12A में गलत रजिस्ट्रेशन, गलत क्लोज डल गई। इट वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपको सही क्लोज में आपको डालना पड़ेगा वाइल रिन्यूइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो दिस वाज द वंडरफुल टॉपिक। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमरजीत कंबोज जी को कि वो फाइनली जो ऑफिशियली हमारा वोट ऑफ थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन एंड वॉइस ऑफ सीए प्रपोज करें। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, आपने ये मुझे एक मौका दिया है। मेहता साहब को मैं पहली बार भी पहले भी सुन चुका हूँ, एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर जितनी बार भी, जितने भी स्पीकर्स को हम सुने तो नई चीजें राइज होती हैं, और जो स्पीकर आते हैं वो अपने आप में एक नई चीज बता के जाते हैं। तो आज के इस टॉपिक में जो रजिस्ट्रेशन, क्योंकि मैं ये समझता हूँ सेक्शन 11, 12, 13 हम ये समझते हैं कि ये 3 सेक्शन ही हैं, बहुत आसान होंगे, लेकिन ये इतने आसान नहीं है। जिस ढंग से मेहता साहब ने एक एक सेक्शन, एक एक क्लॉज, एक एक उसकी एंट्री केसेस को कवर किया है, कि बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। और जो हमारे मेंबर्स अटेंड कर रहे थे, उनकी जो जो क्वेरीज थी उनको इतने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है कि मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई क्वेरी रहनी चाहिए। अल्टीमेटली तो अब वो टाइम भी आ गया है कि जो रिन्यूअल अब कराने का समय है, तो वो बहुत ही अ, ये फॉर्म ऐसे है कि जिसमें सर मेहता साहब आप एक अप्रिशिएट करेंगे कि आज किसी भी आप ऑनलाइन जो हमारे केस लॉज रिपोर्ट करते हैं, सीटीआर हो गया, टैक्समैन हो गया, टैक्स गुरु हो गया, तो मैं सर उसमें देखता हूं कि 1/3, 1/4 जो रिपोर्टिंग है वो इन्हीं सेक्शन 11 to 13 और 80G, और छोटे छोटे मतलब कि जो कमियां रह जाती हैं, कहीं कोड गलत, जो जैसे हमारे कुछ मेंबर्स ने पूछा कि जी कोड गलत हो गया, कहीं कोई थोड़ी सी गलत रिपोर्टिंग हो गई, तो इंस्टेड की हमारे लर्नड सीआईटी कमिश्नर जो एग्जाम्शन है वो उसको एक अपॉर्चुनिटी दे के करेक्शन करवाएं, वो उसको शो कॉज देकर आउटराइटली रिजेक्ट कर देते हैं। मेरे नॉलेज में एक केस आया हमारे एक मेंबर का लुधियाना में, तो सीधा ही शो कॉज आया कि आपकी रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल की जाए, और दो उसमें उन्होंने क्लॉजेस दी कि एक तो आपकी एफसीआरए की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई है, और दूसरे आपके जो डिपॉजिट्स हैं दोज आर मोर देन 2.5 करोड़ ऑफ रुपीस। तो मैं, मेरे से जब उन्होंने मेंबर ने शेयर किया तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो भी एक स्कूल चलाते हैं, तो स्कूल के केस में तो कैश आना ही आना है। तो जब सीआईटी एग्जाम्शन को पता है ये स्कूल है तो कैश तो आना ही है। अच्छा, बड़ी मजेदार बात यह है कि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है, जो ट्रस्ट सोसाइटी है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन के लिए नोटिस आ रहा है। तो बड़े क्लियरली दिया कि हमारे तो एफसीआरए की तो रजिस्ट्रेशन हमारे पास है ही नहीं है, और जो हमारी जो रिसीट्स हैं तो वो सारी जो स्कूल की हैं वो मेरी से 4 करोड़ समथिंग की हैं, जिसमें से 2.5 करोड़ कैश है,
तो वो मेरा ऑलरेडी बैलेंस शीट में है। तो वो जवाब देने के बाद उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया जी अभी तक। तो ये जो 3 सेक्शन की जो रजिस्ट्रेशन है, बाकी मेरे ख्याल में टोटल एक्ट में इतनी कोई रजिस्ट्रेशन का काम नहीं है जितना सरकार ने इस लाया है। लेकिन क्योंकि आज भी डिपार्टमेंट को ये है कि जितने भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन रियलिटी चैरिटी करते हैं नहीं करते हैं, जितनी CSR की जो कंट्रीब्यूशंस आते हैं क्या वो जेन्युइन है नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी ये संस्थाएं चल रही हैं तो बहुत अच्छे ढंग से ये चल रही हैं और वो काम कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों सेक्शंस की एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, वो मेरे ख्याल में टोटल एक्ट में सबसे ज्यादा टिपिकल और है। और जो हमारे लर्नड मेंबर्स इसके ऊपर गाइड करते हैं मेंबर्स को, वो उनकी काबिलियत के लिए तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके इस सेशन में जो मेहता साहब ने बहुत अच्छे ढंग से सभी जो इश्यूज हैं उनको क्लैरिफाई किया, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वॉइस ऑफ CA का भी, जिन्होंने ये प्रोग्राम और इतने अच्छे स्पीकर को सभी मेंबर्स के रूबरू करवाया है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। And last but not the least, thanks to all the members who so in large number joined this session। तो क्योंकि जितने मेंबर्स ज्वाइन करते हैं उससे जो स्पीकर होते हैं उनकी भी नॉलेज में इजाफा होता है, क्योंकि जितनी क्वेरीज हम मेंबर्स की सुनेंगे वो नए नए तरह की क्वेरीज आती, कुछ तो कॉमन होती हैं, कुछ जनरल होती हैं, लेकिन कुछ बड़ी स्पेसिफिक होती हैं जिससे कि और भी ज्यादा जो प्रेजेंटेशन होती है वो नेक्स्ट सेशन के लिए और भी इम्प्रूव्ड बन के आती है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद मेहता साहब का, वॉइस ऑफ CA का, और सभी जो मेंबर्स ने ज्वाइन किया उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अश्विनी जी फॉर गिविंग मी दिस सर मैं एक CA एसोसिएशन का भी कर दो सर। मैं जी सर हो गया तो चार्टर्ड CA अकाउंटेंट एसोसिएशन का एक ही बात है। तो सर मैं बस एक ऐड करना चाहूंगा कि ग्रुप ऑल्दो मैंने 14 तारीख तक बनाया था, बट मतलब देखते हुए मैंने 30/9 तक आई हैव कंटिन्यूड इट, क्योंकि 30/9 तक जितनी भी रिन्यूअल की क्वेरीज हैं, मेहता जी भी उसमें बने हुए हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आई विल कंटिन्यू इट टिल 30/9, उसमें जो भी होगा आई विल भी लिख दिया। हाँ तो वो उसमें ना मेहता जी और कोई और भी वॉलंटरली रिप्लाई करना चाहता है तो वो अपना रिप्लाई देते रहे मेंबरों को, ताकि स्पेसिफिक पर्पस जो भी क्वेरीज हैं वो रिजोल्व होती रहे। थैंक यू सर। लुधियाना में तो कोई क्वेरी होती है जी हम सुभाष जैन जी को पकड़ लेते हैं जी। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स टू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।